हेलो। हेलो मैंगो भाई, क्या हाल? भाई पिकम देख रहे हो मेरी? 7 आउट ऑफ 9 ऑलरेडी करेक्ट। एम्पेरल जीत की तो 8 आउट ऑफ 9। चो। हेलो हेलो शुभम। ये थोड़ी प्रैक्टिस कर लो फिर खेलते हैं। इनकी ज़्यादा क्यों करता हूँ? बहुत सेंसी कम करनी पड़ती है। क्या? हाँ शुभम भाई। तो यार पढ़ी नहीं रही छोड़। अरे भाई नाइन आउट ऑफ 9 के लिए जाऊंगा मैं नेक्स्ट पिकअप में। सेव तो बच्चे खेलता हूँ। तुम्हारे बताओ, तुम्हारे पिकअप कैसे हो? आईडी चेंज कर लो। आईडी कौन सी थी? इसके में एडिड है ना? भटक कर बैठ जाओ भाई। 20
अभी ठीक, फिर उठ गया। आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट रूम किधर? तेरी आईडी वो है नॉन प्राइम इसकी, लेकिन फिर भी ये ऐड कर सकते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है भाई, खुल जा सिम सिम। विंडोज 11 बहुत मानती थी, CSGO खुल गई। ये भी वाला फैन हो ये लोग नहीं हो भाई। हेलो हेलो। और सर बताइए क्या हाल चाल? बस एक नंबर, तुम बताओ भाई। एक्सट्रीम शुभम भाई। दूसरा वाला अकाउंट है शुभम आ गए। दोनों शुभ में एक साथ, और कोई है तो आ जाओ। सर रैंक अप मैच है? हाँ ये इसमें रैंक अप थोड़ी होगा। अच्छा इसमें नहीं होगा। मिला मैच मिला, बड़ी जल्दी मिल गया मैच में, को उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी मैच में। क्लाइम नहीं मिल जाएगा, बस D2 कैश और क्लाइम लगा हुआ है। क्लाइम क्यों लगा हुआ है? मैप कौन सा क्लाइम? हाँ तो मैं भी नेक्स्ट आ जा, ईस्ट आ जा। कहाँ से करूँ? इंडिया वेस्ट 71 पिंग आ रही इंडिया वेस्ट में। क्या 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 होता है? हाँ तो कर देते हैं। गुड वाले से आकर रैंक अप करा दीजिए। क्या चीज? कह रहा हूँ वॉइस तो गुड वाले अकाउंट से आके रैंक अप करा दीजिए। करवा देंगे, वो भी करवा देंगे, लेकिन खुद से बनोगे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। नहीं एक एक स्किन ली है। क्या चीज? एक एक स्किन ली नहीं। एक स्किन लिए नहीं लिए तुमने? एक स्किन कौन सी कौन सी? सामने वाले तो मार क्यों रहे? व्हाट इज दिस बिहेवियर? हेलो हेलो हेलो। अब ठीक है, इसमें भी नॉइस होता है। इसमें नॉइस फिल्टर भी था पहले स्ट्रीम में, पता नहीं कहाँ गया। मैं क्या कर रहा हूँ?
सर पिंग क्यों आ रही है भाई? नाम चेंज करा था। इजी इजी बोलते बस हैकर नहीं हो। कल ड्रीम वाला जो केस नहीं मिलता है वो खोला हाँ। तो साला चीटिया यूएसपी निकल कौन सी? कौन सी वाली? अरे P2000 नहीं होती है, अच्छा अच्छा अच्छा, वही चूतिया वाले निकल गए। सही है बात। दोनों यू अपर टनल से भी गए गाइस। Defusing now. अरे छूट गया था। ये वैसे सर्वर ही तो है। Time to move. तीन बंदे एक साथ होते हैं, दो बंदे लगते हैं। दोनों मिड है। नाइस है। हम लोग किलो M4 से मैं स्काउट डे करती हूँ। M4 दीजिए। अरे ये P250 ये P2000 इसकी मिली है। ये तो बहुत गंदी है। हाँ पैसा बर्बाद हो गया जो तुमका केस खोलने के चक्कर में। अभी नहीं खोलेंगे तो ये के लिए दिखाना। तुम ही देखे मैं तुम ही देख क्या लगे भी बैठ। ओ नाइस स्किन। टेक टेक टेक। दो आउटसाइड लॉन्ग दो। हाँ हेलो TMKFC, हेलो हेलो। मुझके नहीं मारा मैं। रिपोर्ट करते मेरे को इसलिए नहीं मारने का। Go bro, easy for you. बताइए। जा घुस के मार दे। ऐसे मारेगा तो मार देगा वो। Come on, let's go to further. Decoys out. मार दिया रे बाबा। बॉम्ब और स्किन तो अच्छी अच्छी है। एनिमी बेस
भाई ये सुंदर स्किन है। मेरे पास भी यही वाली है एफएमएस की। ये 5-7 की ये वाली अच्छी है, ये मेरे पास है अभी। ठीक है। हाँ ये भी अच्छी है। तो मैं दे दो काट के। एक आ रहा है। 90 टैग है, 90 टैग। दो अभी तो वो ही। वन मोर 96 टैग। जब भी जाओ छोड़ो यार। My aim is not good in this game, bro. Try practicing. When I started, my aim was also worse. बहुत गंदा ये तो भाई, बहुत। It's 1 HP, bro. इमबॉट्स वगैरह खेलो, जो मैं मैप खेलता हूँ ना वो खेलो। उस पर आराम से धीरे धीरे मारने का ट्राई करो चलते हुए बंदों को। इजी एम सुधर जाएगा, धीरे धीरे आ जाओ। अपन को फास्ट नहीं मारना है, अपन को प्रिसाइज मारना है एकदम। क्या बंदा वो, क्या डीपीएस की बहुत है हेल। फक आ गया राइट। Just run, waste time. Waste time. भाग जा। 5 सेकंड बचे। एम परफेक्ट इस कर ब्रो। परफेक्ट तो किसी का भी नहीं है, इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे वो जो मैप में खेलता हूँ ना, रिफ्लेक्स ट्रेनिंग वाला, गो टू वर्कशॉप, मेरे पास भी सेम स्किन है ये वाली। रिफ्लेक्स ट्रेनिंग, और ये वाला मैप है, ये डाउनलोड कर लो। और यहाँ पे बॉट चारों तरफ से चलते हुए आते हैं, उनको धीरे धीरे मारो, खड़े रह के धीरे धीरे मारने का ट्राई करो। 95 टैग है। मैन दो। ट्राई करो स्प्रे ना करो और डायरेक्ट मारो। कोई बॉट है ना तो यूँ मारा, तो दूसरे बॉट पे मारो, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। मिड आ गया है। पीछे हाँ शॉट। नाइस ब्रो। ओके तो कोई नो प्रॉब्लम ब्रो। जस्ट कीप इम्प्रूविंग। लेता नहीं यार, मैं नहीं
my CSGO more sensitivity exclamation sensitive exclamation sensitive exclamation sensi. इसका प्राइम नहीं खरीदेंगे क्या? क्या चीज? After we win, नहीं drinks are on me. बम ड्रॉप यूटी one long door. One second bro. Wait, कहाँ खुल गया? Type this. सबको मार दो शुभम भाई। अरे नहीं, आप ही से सीख रहा हूँ, सब आप ही से सीख रहा हूँ। बस फिर मार दो सबको। सब टी बेस कैंप किए हैं, कैंप 93 टैग है। Hey, hey, hey. ये गए होंगे Hey, सब long. जा एक ले ले ग्रीन Hey, long. हाई Too बिट much. में। अरे बॉम्ब तो यहीं था। What the hell? Pit Pit की तरफ. pit one bro, pit. ड्रॉप दूं क्या आपको? ऑफ दूं? ऑफ नहीं चलो। चला लीजिए आप ऑफ। नहीं मैं स्काउट कर। इजी अपोनेंट है, इनके खिलाफ थोड़ी ऑफ यूज करो। तो तुम मिड पिक भी नहीं बताओ। क्या कह रहे ब्रो? बॉम्ब ड्रॉप। कर गए बंदे। अरे Where is it? टी बेस लग रहा है इधर ही है। कौन चुप है? जी गया। पीछे लगे। बॉम्ब नहीं दिखा। ओनी जुका बचा, ओनी जुका। भाई मिल ही नहीं रहा है बंदा। तो है मारा भी इसे। ऐड कर लो। तुम्हारी कोई मेन आईडी बता देना। अरे मैंने यही है उसका मेन है। Let's go. हम गरीब है गरीब।
बच गया कैसे तो He's watching I mid. Two guys I mid. I mid right side. One more. डॉन रॉक Mando. ठीक है ना? इंस्टाग्राम क्यों नहीं खोलते? ये नहीं चढ़ पा रहे हैं यहाँ पे। फाइव तो क्या? वापिस चढ़ो वहाँ पे। नहीं चढ़ पा रहे हैं। चढ़ो लेफ्ट में, लेफ्ट वाले कॉर्नर पे करो। चढ़ गए? चढ़ गए ना? हाई मिड था, हाई मिड। Diamond bro. Easy for you bro. No kill him bro. You don't scare. वो टाइम निकाल रहा है। नाइस नाइस। जो इस पे से लेता है। इस पे से खेलो फिर इस पे से खेलो। इस पे से खेलो। We need to hurry. कोई भी मिड पिक नहीं कर रहे यार। Throwing smoke. कार। One more LT. LT बेस होने से। क्या खेल रहे हो यार? इसकी से कैसे मार रहे थे इतने आराम से? पैनिक नहीं होगे तो मार सकते हो। बिना पैनिक होके एम करो आराम से। मतलब कौन से गन से बिना पैनिक हुए मार सकते? सारी आराम से। Flashbang out. फ्लैश हो गया ड्यूटी के बाद आउटसाइड। डायमंड भी चाहिए यार। डायमंड और अगर डायमंड टीपीएस सारे ने देख लिया। मेरे को नहीं लगा तो देखेगा। मैंने एलटी ये बच जाता हमारा एंड में। राइट साइड वहाँ आपस में एक दूसरे को मारा है। इजी सर, ये सब इजी। वो टीम किल कर रहे हैं। सलाम रॉकी भाई। डीएलसी खेलते हैं ना, अच्छा लगे।
मेरे लिए भी हार्ड हो जाएगा थोड़ा, लेकिन चलना नहीं आती मेरे को लॉल। तो 41 10। LT आहे मिट जरूर। इजी 3 दे दिया, 60 डैमेज है। सिटी ब्रो सिटी। उसको अभी भी पता नहीं चला कहीं से वो। क्या ये सब? नए प्लेट एक डीगल दीजिएगा। एक दिन चला गया थोड़ी बेइज्जती कर। आज नहीं है बेइज्जत की, कल कर दिया था ना, परसों, अब कल है। Flashbang. पड़ गया वन अपटन। इजी इजी शुभम भाई आपके लेफ्ट में। सीरियसली खेलते हैं, थोड़ा मजाक हो गया। हाँ बे, हारने लग गया अपन तो। लॉल अभी तक तो मजाक चल रहा है। ठीक है, नॉन पर है मैं भाई बीस्ट, नॉन पर है मैं गेगा न्यूज। एम पंच की वजह से नहीं लगा ब्रो। Try to go beat rest heroes because heroes. So that we may be free. चलो आ जाओ। City spawn. एक आ रहा है एलटी, मतलब यूटी आ रहा है। 2 सिटी है। City spawn. Door. आगे दिखाओ। 3 यूटी आएंगे। अरे यार बच गया यार, बच गया, देख लिया एक बंदे ने। लेफ्ट वाले को दिखाया भी नहीं मेरे। ये वाली स्किन ली है नहीं। ओ भाई भाई भाई, अबे इतनी महंगी स्किन क्यों ली? कौन सी है? ये तो कितने की? ये तो 2-2.5 की। 2000 की ली। तो इसके अच्छा तो प्राइम ले लेते भाई। वो भी लूंगा ना, अभी जरा कॉलेज चल रहा, बिजी है। हाँ तो CS तो खेल ही रहे हो ना। काम भी नहीं खेल सकते। अगर CS खेल ही रहे हो तो प्राइम भी ले लो लगा। आपको लगे सिटी spawn. I'm setting it down here. मैं कुछ चाहूँगा। शॉर्ट प्लान। शॉट इन नाइस। क्या खेलते अपने लौंडे भाई।
ये जूम सेंसिटिविटी बनाने से एआर पे भी असर पड़ता है क्या? क्या चीज़? मतलब राइफल वगैरह पे भी असर पड़ता है जूम सेंसी बढ़ाने से? नहीं नहीं, जूम सेंसी से तो फिर स्कोप की सेंसी बढ़ेगी जो अपनी गन में होती है, स्नाइपर में होती है और स्काउट में होती है। गुड वाला बंदा गुड मारना। इंडिया डिफेंस On my way to plant. शॉट आ गया। नहीं रहा भाई इनको। Let's get in and get out, okay? No time for bloody dilly-dallying about. कहाँ से भी होता था ना कहाँ से? Smoking. Mid push. सुसाइड क्या मारा भाई? Throwing fire. Grenade out. I'm throwing smoke. Molotov out. आर्मर लेके खेला करो नेक्स्ट टाइम भाई। ऑरेंज आर्मर लिया करो पहले। Cover me while I plant. स्टैम्प भी नया है क्या गेम को? क्या चीज़? अरे शुभम ये वाला जो है वो भी नया है क्या गेम में? नहीं नहीं पहले से। Let's go, let's go. Flashbang. Flashbang. Burn. Throwing a decoy. हॉप पड़ी उधर ए लॉन्ग पे कोई बात नहीं। दो। बंदा किधर है वो? तो बी खेल रहा था ना, बी स्मोक में बैठा। I am planting the bomb. ड्रॉप कर सकता हूँ आप जी? नहीं आप चला ही नहीं रहे हैं। आप सामने वाले को डरा दीजिए थोड़ा। नहीं भाई वो पहले से ही डरे हुए हैं। Forward. हेलो भाई पुष्कर, क्या हाल है? Throwing flashbang. कैसे चल रहे हैं एग्जाम? Throwing flashbang. फ्लैशिंग मिड I'm throwing flashbang. लॉन्ग है। ने बंदे फ्लैश में। Grenade. लॉन्ग कितने थे? लॉन्ग पिट में गया होगा, हो सकता है वहीं खड़ा हो। Flashbang. साइड साइड है।
आपको कैसे पता चलता है गोली किधर जा रही है स्प्रे की एके की? क्या चीज? पकड़ के घिस देते हैं, मतलब आप कहीं से भी पकड़ के घिस देते हैं एके को। अब स्प्रे कंट्रोल पता है ना मुझे। डिस्क्रिप्शन में वो कंट्रोल करने का छोड़ छोड़। कंट्रोल करने का है। मैं बड़े आपके से मैं भी एक नंबर एक जरा परेशान हो गया हूँ पढ़ाई कर। कंट्रोल नहीं करने आता है, मतलब जैसे कि मैं हिट से पकड़ के घिसता हूँ हमेशा बॉडी पे, आप जैसे कि इधर से हाँ, हाँ। घिस दे रहे थे। हाँ वो क्या मेरे को आदत होगी ना, वो पता है थोड़ी बहुत बुलेट लेने थे। फिर भी गलत था मेरा स्प्रे की पढ़ाई है ना, अगर सही होता तो पढ़ जाता। अच्छा शॉर्ट चल नहीं बीरेज करते हैं, आज बीरेज करते हैं। ऑफ ले लिया मैंने, 2 ऑफ। तो एलटी देख लेना आप। Let's send them to the sick bay, shall we? बच गया। भाई किधर है भाई? नहीं बी क्लियर कर, बी क्लियर। बी क्लियर है, बम बम बम, बी क्लियर। चुप के बैठ। ब्लू हेलो ब्रो, कैसे? मस्त भाई यार कान भाई, तुम बताओ। What the fuck? सॉरी ब्रो। और डिफ्यूज करने लग गए, कितने बदतमीज है। डिफ्यूज कर रहा है। नाइस ब्रो नाइस। है यार, किट है इसके पास। किट है क्या आपके पास? है दिख रहा है पीछे, देखो। मेरा पता नहीं क्यों FPS लो आ रहा है कुछ दिनों से, समझ में नहीं आ रहा है क्या दिक्कत है। 140 चल रहा है FPS। लैपटॉप है क्या? हाँ लैपटॉप। हाँ लैपटॉप में हो जाता है कभी कभी ड्रॉप, टाइम के साथ लैपटॉप भूल जाता है। कम करते हैं। Flashbang. एल्टी लॉन्ग क्लियर। Flashbang out. तो बेचारे को पता ही नहीं पड़ता। स्मोक किसने किया है? शॉर्ट होगा प्रॉब्लम। Laying down some fire. स्मोक में था, वही तो मैं बोल रहा हूँ। स्मोक तो किया। वो यही वाला बंदा स्मोक करता है, निंजा डिफ्यूज करने की कोशिश। फिर से भी चलता बी रश भी मापरो हम लोग। ये इसको पता नहीं है ग्लोबल हमारे साथ खेल रहा है। तीस किलो में मेरे बहुत जल्दी नहीं हुए। अबे क्या कर रहा है भाई, कैसे फ्लैश कर रहा है? Gonna fix this bomb now. विंडो से पीक करते रहो, अंदर चल जाओ, मेरे को एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। 2 एक सिटी है, एक मिड है। काश मेरे को ना देखे। डिफ्यूज करने दीजिए। लैग हो रहा, लैग हो गए थे। ठीक है यार, इन पे हैकुरमैन नहीं भाई, घुस के मार रहे थे सर, फ्लैश में मारना पड़ा। हेलो भाई दर्शित, क्या हाल है? नॉन प्राइम खेल रहे हैं भाई, माधव जी जिस लॉन्ग फ्लैश करना मैं अंदर घुसता। मैं करता हूँ फ्लैश और तो चल। थैंक यू।
40 किल ऐसे हो जाएंगे भाई। कोई आया ही नहीं। नाइस शॉट। कार। तो छुपा हुआ था, वो इतना गंदा छुपा हुआ था कि पूछिए मत। तो क्या? नहीं वो कार पे सिटी इतना से आया, गंदा छुपा हुआ सिटी से शायद, सिटी से आया या कार पे ही होगा, नीचे मुंह करें। था। कार के हाँ नीचे मुँह कर देना था। फिर लॉन्गी चलेंगे, मारेंगे उसको जो। चल चल भाई, काट दिया भाई मेरे को नॉन प्राइम वाले बंदे ने। फ्लैश फ्लैश कर। Mid push 1 by 1 by. लग गई उसकी गलती। भाई मेरे को ही मार दिया। गैस गैस लॉन्ग ऊपर, ये भी सही है। बिहाइंड यू, मर गया वो। आता चलो फिर तो बिल्कुल ब्रो, पढ़ाई करोगे तो। मिड डोर ये तो ट्रायल में ना लगे। एंटी आ जाओ, बीरेस करके खत्म कर, बीरेस करके खत्म करते। रश भी कर, रश भी बाय SMG से रश भी। चलो शुभम मच, बम डालो। टेक बम ग्रीन, टेक बम। Okay, I'm feeling a bit good about this one. क्या लगता है जीत जाएंगे? देखता हूँ मैं। नहीं आ जाओ। रुको शॉट डोर आ गए। मिड डोर। एंटी ब्रो बढ़िया खेल रहा है वो। गेम सेंस 100 ये चीज़ क्या लगाइए। शॉटगन लेकिन मिड घुस रहा है। कौन मिड घुस रहा है? वो बंदा उनका 18 को एग्जाम हो जाएंगे, तब से रेगुलर हो जाएंगे। सही है भाई, एग्जाम दो एग्जाम। आप निकालनी पड़ेगी इतनी ग्रेड। Time to move, knuckleheads. We need the bomb. अरे नहीं, ऑपर है। शॉट ऑपर। गूज ऑपर। भाई सब आप चला रहे हैं। अरे लॉन्ग ऑफ साइट ऑफ। नहीं लगा लिया ना कहीं है तो सब नहीं लगा लिया ना।
behind you, behind. पीछे 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 शुभम शुभम पीछे साउंड नहीं आती है। अरे इससे ऑडियो नहीं है, इसने बंद कर रखा है ऑडियो। शॉर्ट स्मोक करता हूँ, शॉर्ट घुसते हैं लेकिन ऑफर रहेगा। चलिए मैं शॉर्ट स्मोक करता मैं मिड निकालता हूँ, शॉर्ट स्मोक करो। Let's move. Come on, hurry up. शॉर्ट स्मोक सही हो जाए, बाकी तो कोई Throwing दिक्कत smoke. नहीं। Throwing flash. नाइस फ्लैश है। What the fuck? I'm going to plant this thing. ये मार रहा है इसको, साइड पे साउंड नहीं आ रहा। एक मिड और एक बी। यहाँ से बी चल जाओ सीधा सीधा बस। शॉर्ट से कूदेगा, ध्यान रखो। बहुत गंदी बात गिर छोटे लगे मुझे। भाई वो सांस लेके मारते ना उसको, मर जाते थे, पैनिक हो गए। गया। कमबैक मारो ने 6 और 2 8 राउंड। तो पीछे पाछे 7 8 मान ये 13-8 से जीते वो लोग कमबैक। क्या खेलते भाई नॉन प्रेमर। नीचे नीचे And win. I'm going to take a On look the at tab. some synopsis highlights just because we were talking about him a lot and about, okay, maybe showing us a little bit more in this major. But जीते के लोग। 1 हो गया, 16-8 भाई 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 भाई। कौन सा है मैं थर्ड बॉटी को जीवीटी। और कोई भाई जिसको नॉन प्राइम खेलना है तो आ जाओ, नहीं खेलना तो मैं पैसे पकड़। ओ क्या चल रहा है मेरे? एक सेकंड आया। ये और जीत जाए फिर मस्त हो जाए, एक नंबर मजा आता है। इसी कितने का लिया? 2 से डाला। हाँ इसके अराउंड एक फेसिट गेल। कौन सा प्ले डाउनलोड करता हूँ जल्दी कर ले। तो तेरा इतना ही है, 103 चाहिए मेरे को लेवल 6 होने को। बहुत तेरे चेक हार गया था ना, -25।
बोलो चला रहे थे। अच्छा हाँ, ये सामने वो प्लस वगैरह में तो हमारा बंदा छोड़ के चला गया। इसमें कितना महंगा? हाँ, महंगे महंगे पार्ट्स हैं यार। कैबिनेट खाली कैबिनेट ही 17 का लिया था मैंने उस टाइम। तो अभी शायद 15 साढ़े 15 का चल रहा है। 17,000 के लिया था कैबिनेट खाली कैबिनेट। तो तीसरा मैप स्टार्ट नहीं हो रहा। किसने लिया नहीं, किससे लिया, किसने लिया, किसने लिया? मैंने लिया। जीपीयू कौन सा है? जीपीयू 1070 है फिलहाल। जब ग्रेड करूँगा 3070 में, 3070 3060 अराउंड इनमें से किसी पे करूँ। किस पे व्यूज आ रहे हैं? इस पे व्यूज बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस पे व्यूज बढ़ रहे हैं। ये भी ठीक है, ऐसे भी गलत सा। Hello guys, it's your boy normally from Sweden, and in today's video I am going to be playing CSGO, but every time तो फिर प्रोसेसर कौन से? अभी 3950X है, 16 कोर। resolution in CSGO at some of the lowest res possible, unless thing at 50, this is what you and lower and lower. All the way down, let's go Q, and this is by why is it? So we're starting by 10. Resolution, I am hey. Can I get the fucking oh no. Seriously, change resolution, many people it's getting harder to say. You can just squint your eyes a little bit and it's basically the I can barely read the people's names on the screen. 3 died. Resolution is gonna change regular, but the top resolution is 192 by 108. Okay, let's see the next resolution. Is it halftime now? I think it's halftime. That means it's gonna reset. So it's gonna reset up to 1920 by 1080. 1080. No. One jungle. I have to just plant. I can't do anything more. Oh my god. It's looking worse than the Game Boy. If I sit like this and I squint my eyes, I can see what's happening, kinda. I got team killed! I can see the colors! Like this and I squint my eyes, I can see what's happening, kinda. I got team killed! I can see the colors! Oh. Guy. Nice. Get up! Dance. Someone got the drop. By the colors, that looks like a Dreams and Nightmares case. Thank you guys for the game. That was very good. Did we win? No, we kinda lost. Fuck. Holy shit. मस्त है। भाई गेम चालू कर दो, हमें भी देखना है। A little bit of him if you want. Yeah. I thought you were Flatro, French. are you? हमारा गेम तो चालू नहीं।
Flutter, we also saw on the camera, Regon was getting really animated, and he was like, calm. Not too much, and I think, as we said already, that's going to be important for both of these squads. When we look at kind of the tape of MIBR, they had an insanely close game yesterday also against Eternal Fire. It was on Vertigo, and they brought it back. And I think when I look at the style of Counter-Strike that Eternal Fire likes to play, Bad News Eagles fit in kind of the same wheelhouse, albeit with... I can't speak to the experience too much, right? Because you obviously have players like Azantares who have been there a million times before. But what does that mean for MIBR? Can they take some building blocks from that victory? Yeah, a little bit. I'd say, you know, at least take the confidence. They played it 3 times, twice doing RMR. They played it once during this tournament. Every single time they played the map on land so far, they won it. Yeah, so there's a decent amount of confidence coming in. You brought up Exit, you know, and you said that he's a guy that is supposed to come in for the clutches. And I just want to read one stat I found right here. He's only attempting an opening kill in 7.2% of the rounds. That is probably the lowest I've ever seen any player on any map. That is absolutely insane. So he needs... मेरा प्लानिंग तो 45k का पीसी असेंबल करने का है सिर्फ CPU Ryzen 750 700G के साथ, ये जिसमें इनबिल्ट GPU आता है वही है ना सर? 700 किस मतलब ज़्यादा सस्ता नहीं है तो इसमें कितनी FPS देगा? 80 100? I think we talk a lot about CSGO kind of the setup of these teams, you know, the organizations behind it for BNE that is all developing. You know, they're talking about getting that sports psychologist and getting everything else, but it's kind of like, yeah, they're workshopping it as they... It's such a 5600 लेके 2-4000 एक्स्ट्रा लगा के 1050 Ti reload 10-12 का सेकंड हैंड पीसी से, और जमीन आसमान का अंतर होगा दोनों पीसी में. Down to in this one. You're about to decide the rest of your at least life on the short term in the 16 next round. That's what's going to happen. अगर CS खेलने के लिए ले रहे हो तो, अगर मल्टीटास्किंग के लिए ले रहे हो तो फिर तो ठीक है. Going to make mistakes. This is how it is in Counter-Strike. Yes. I know it's the most important map. You're going to lose a clutch. You're going to overpeak when you don't have to, and you're going to use stupid weapons. That is how it works. Now, can you fully reactivate for the next round? And this is where it matters. This is where I want to see them not throw away rounds. Doesn't matter. You have to stay strong in your head. ग्राफिक कार्ड इनबिल्ट वो बाद में लगाने का सोचा है तो ले लो, अगर नहीं सोचा है तो फिर तो मैं बोलूँगा ग्राफिक कार्ड लगवा लो. You're playing with the emotions on your sleeves. I want to see that throughout the entire game. इसमें sounds good for us to say, you know, तो अगर फिर तो क्या दिक्कत है अगर 150 से 200 मिल रहा है? When it matters the most. You got to this point for one reason. That was because of that set identity. Without GPU मिल रहा है तो फिर तो कोई दिक्कत. MIBR and Bad News Eagles, stay true to yourself, and perhaps then you will be able to call yourself a legend after this. Let's head over to the casters and get into Vertigo. Thank you guys. Yeah, the scene set perfectly. Just one of these two teams is going to be securing themselves that legend spot to be in the top 16 of the teams in the world, biggest tournament of the game. It's going to be the highest highs and the lowest lows in either sides of the server. And it being your first major as well, right, to be able to push that. So I think that to be able to have that to your name is a huge accomplishment. This is what it's all about. This is the World Cup of Counter-Strike, right? This is what everybody plays for. It's the 1650 super 1650 super से तो अच्छा कोई और ले लेना बाद में. Prices कम हो जाएंगे. 2060 ट्राई करना 2060 लेने का at least. A bit like a life coach in a lot of this, right? But it is difficult in these situations to be able to handle these moments. या 3050 लेने का ट्राई करना. 3050 भी अच्छा है. वो 30 की रेंज में 1650 super तुम्हें 25 के आसपास का पड़ेगा. उतने में 30,000 में तो 3050 आ जाएगा. The high of the highs or the low of the lows, depending on how this game goes, because either of these squads making it to the top 16, that is an achievement in itself, right? That is them probably overachieving a lot of people's expectations throughout this challenger stage. So it's a massive game, the biggest game of, I would say, all of these players' careers. Yeah. And it's about to go down here on Vertigo with MIBR starting on this T side. Now, the T side, that's the biggest takeaway from that last sentence, Chad, because I saw you crunching numbers beforehand. क्या हो गया भाई? मैच नहीं whipping मिल out रहा. the abacus. It's not been
the most 131 successful क्यों of कर these रहे हैं फिर भी sides नहीं मिल रहा what the historically hell? when you look back at the first two maps. Yeah, that's the thing, right? Even though they did win Nuke, it was through their CT prowess more so, or denying T rounds of Bad News Eagles. So for MIBR, over 2 maps combined, only 7 T rounds, and now they have to start on the T side and see if they can do better than that. So we're putting a lot of pressure on it. We're talking about it a lot. It's the cliche, if you've been following Counter-Strike for a long time, of how important pistol rounds are. But in the CT side of meta, with this Silence Stem 4 that is in vogue right now, these pistol rounds are worth a lot more than maybe they have been in the last couple of years. Yeah, and we've seen CT lockouts on Vertigo hurt. They really hurt. If you cannot seem to find any legway up ramp, you're not allowed or given the space that you're expecting to have, you see that you quickly rifle through the book and run out of pages. It can be disastrous if they don't get their teeth in early, which is what the pistol, of course, can help mitigate. Yeah, we actually got to do the game the other day that was the Bad News Eagles taking on Imperial on Vertigo, right? And one of the keys was the CT side and GXX having a massive performance. Now, there was a couple of oopsies, I would say, in the way that Imperial were approaching their team. They weren't using their utility quite precisely. Frame peaks were coming on very easily from Bad News Eagles to get the pick onto Vinny every time he wanted to jump up towards scaffolding. I think he gave away quite a few opening deaths in that regard. I don't think MIBR are going to fall foul in the same fashion by any means. I've watched a bit of their Vertigo over time. I'm really impressed with the way that 𝘾𝙆𝙈𝙈𝙀𝙉 and 𝘎𝙃 are able to be these aggressive riflers over towards that A ramp once they do get onto the CT side. They have some great boost. They stay very nimble, and we can talk about more of that once we get there. But I think it's just going to be a little bit more pressure applied to the Bad News Eagles this time round on Vertigo. They're not going to get away with those free openings, or at least I don't think they should be getting away with those free openings right here. So when they're up against the executes, remember how jarring they wanted to stay? It was early on in that Imperial game. Denying that plan, they ran out of time. There was a lot of situations that were kind of scrimmy and similar to what we were seeing on Ancient, where they're just getting stuck on Desk is talking about when saying stay true to yourself. Keep going for those plays. If it's worked for you to get this far, you need to do it now when the pressure is at its highest. Otherwise, you might just make that split-second lack of decision, and it's going to come back and bite you in the ass. ये वाला क्यों नहीं हो रहा है? इनके भी technical difficulty लग रही है. Both kind of referring to identity. And BNE, I mean, their identity has been growing and developing over the course of their run. We're talking open qualifiers into RMR, into now the Challenger stage, and one map away from the Legends. MIBR standing in their way. Just a quick update for everybody at home who wants to get this game underway. The players do, and we do too, but just waiting for one more to get back into Counter-Strike. A little bit of a crash right there. Shouldn't be too far away. Technical difficulty. Players in the server right now, just waiting on one more of the MIBR players to lock and load and give us the big thumbs up to get this one underway. Yeah, headsets still off and just trying to keep themselves warm, keep yourself centered. It can be frustrating when there is a little bit of extended delay because you've just got yourself into the right mindset and you can feel that little test just constantly. ये IM use कर रहा है कोई सा तो. हाँ ये लोग अपना equalizer लगाते हैं setting के साथ. और इतनी शानदार आवाज आती है उसमें. सारे footsteps सुनाई देंगे तुम. You could be going home tomorrow, packing your suitcase, constantly replaying those choices you made on Vertigo. Yeah, I said at the start of the day, right, there's going to be tears one way or another, and I think that'll be the case just because how emotional are we. We see the highs of these guys when they're celebrating. We're going to see the opposite side for the losing team of this when it's all said and done in, well, 30 or more rounds time here. So we're going to get a crazy celebration on one side. We've seen the way that these teams celebrate before. If I'm the referee standing behind, I'd make sure that I have a bit of a wide berth this time round. But yeah, the other side of things is going to be a very glum-looking team who is going to be knocked on out after solid performances from both. एक तो MIBR है made in Brazil ये वाली team Brazil से और दूसरी Bad News Eagles. They were able to Europe की है वैसे. on Vertigo. That was the game where we were और इनके players अलग-अलग हैं मतलब Rigon है GXX ये वाली team. Tournament on 𝙈𝙄𝙆 against Eternal Fire. Impressive that they both अलग-अलग countries के बंदे थे. क्या 4 एक country के और एक country के. Like they're wide berth. It's actually quite impressive. ये last final been able to get away with a bit of a smaller one. major start होने वाला है उसके final spot के लिए legend spot के लिए लड़ रहे हैं. Last map है इसमें जो जीता वो चल जाएगा legend spot में. Second last spot मतलब. Against Eternal Fire in a best of 3. It was 2-0, 16-13 and 16-11 on Vertigo and Nuke. They lost to Astralis on Overpass the day before 16-13 and we just waited to Astralis who got destroyed by Liquid in a two-way fashion. Blame F did an awful lot of work right there. Just Switzerland के बाकी सारे for the first time is not going to be in the top 16 of the major for the first time in his career. It was up to 𝘲𝙗 and Zip. Both one of them was going to have their head in their hands, and I think for some a real surprise that Liquid pulling off that 0-2, not for Cadian.
that madman called it 30 seconds after they conceded that the 3-2 sweep was coming. Well, Cloud9's back, but not this team, right? Yeah. I guess they're North American nonetheless. Just to go through the last two results, it was a victory over 9Z, 16-14, and their opening game for MIBR of the tournament was a 16-14 loss on 𝙈𝙄𝙆 against Outsiders. That was the one that worked out very, very close right there as part of a comeback. But yeah, they've had tough opponents. Outsiders, Astralis, not easy to trifle with, and it seems that here with BNE they have definitely met their match. We've got a nice even affair. I think the embodiment of that is the fact that we're here on the third, both teams picking up their map picks. It's been close. There's been mistakes from both sides, you know, unforced errors, and there's also been some forced ones. Yeah, look, there was a couple of almost unforgivable moments out of BNE that they recovered, right? That Scenarii clutch that he had there over against Turtle, well, it wasn't against Turtle, it was Turtle saved them 4, right? So there was a few moments, there was some sketchy maneuvers, but it worked on outright that pace, that play. They brute force, didn't trade. नहीं हो रहा भाई, ये अपन अपना ही खेल. ओके, एक सेकंड आईडी चेंज, अगर नहीं मिल रहा मैच. हट यहाँ से. एक सेकंड. दूसरा गेम स्टार्ट. हेलो हेलो. हाँ भाई. ये आवाज एक कान से क्यों आ रही है मेरे को? मेरे एक ईयरफोन को क्यों? दूसरा ही कान खराब हो गया आपका. मेरे तो चल रहा है. मेरे क्या दिक्कत है? मेरा भी सब बढ़िया चल रहा है. अभी तक तो आ रही थी. क्या हो रहा है? हाँ. म्यूजिकल बैग को ही बुला लो, सीएस खेलता है. एक सेकंड. अच्छा, वो लोग बड़े वाले हेडफोन्स में छोटा वाला हेडफोन्स क्यों लगाते हैं? बड़े वाले हेडफोन्स नहीं है वो नॉइस कैंसिलेशन हेडसेट है. ऊपर जो लगा है ना बड़ा वाला, वो नॉइस कैंसिलेशन हेडसेट है. उसके अंदर ईयरफोन्स हैं बस. वो नॉइस कैंसिलेशन हेडसेट के साथ वो है माइक. ऐसा है. आजा खेले. म्यूजिकल ऐड का है. हाँ ना, यहाँ पे बैठा था ना अभी. डिस्कॉर्ड पे तो ऑनलाइन बैठे हैं वो लोग. तो कभी मैसेज कर दे. स्टीम पे है. हाँ, स्टीम पे भी ऑनलाइन. तो गेम खोल ले. कर दिया, इनवाइट कर दिया मैंने. देख. हाँ स्टीम. तो कितना पेमेंट मिलता है? किससे पेमेंट? Outsiders ends liquid and two YouTube से तो zero है. decided in about 30 rounds of play. Looks like the fist bumps are coming in. All 10 bodies are now in the server. They're going to be kicking off at Vertigo. Bad news, Eagles. MIBR, all the marbles on the line right here, right now. Everyone readies himself. Final pre-match rituals complete.
And ladies and gentlemen, just one team will emerge victorious. One map to do it on. 51 floors high. We find ourselves duking it out. CT start for BNE. It's going to be MIBR taking to the T. And look how many are heading to mid. This could be that mid to B that's becoming very vogue as of late. With Quick 4 and noisy. CTs leaning A, it is going to be a lot for the reaction here. 𝙎𝙃𝘆 screaming for aid. Hides on the gen. This first frag from him could be a lot. And instead they have the site. 𝙄𝙆𝘆 for MIBR. Rotates are in. Bomb is down. Hard to retake. 𝙈𝙆𝘆 confirms some presence close gen. Time ticking. Kit present on GX. It's only one from 𝑟𝑔𝑜n. Strafing in. 𝙎𝙆𝘆 plucks him from the sky. His boots do not touch the ground. And look how quick that comes through. 3 job नहीं out of करता मैं। 𝙎𝙆𝘆. And that's someone you want to see fragging early if you're an MIBR fan. Yeah, 𝙬𝙆 loved it as well. They're firing his boy up, letting him know how much that means. We just spoke about it earlier. 70 rounds over 2 maps, even with the nuke victory. And there's the pistol, worth its absolute weight in gold right there. This conversion, even more important. ये कौन है बे? Eagles have... ये तो सड़क से उठाया था। लोग जाके पहले एडी करें। इससे मुझे पहले एडी का है। पहले एडी में कौन सी है? रात में खेल लेंगे अपन को कोई दिक्कत कोई शॉट दो मार गए The MP9 he has repelled MIBR for now, but look at the damage done. They are really wounded. I want to see a juggle. ऐप डेवलपर था अभी नहीं MIBR have regrouped and cut noise. They have Molotovs here. The default molly right here to 𝑟𝑔𝑜n could be perfect. He's so low on HP, you have to respect it. Don't have to give them this fight. Smoke's flying through. 𝙬𝙆𝘆, the leader of the pack. Nothing from the initial Molotov. 40 seconds, they aren't in a hurry. Procedurally advancing into the site, and there you go, one through. It's 𝙬𝙆 again, high impact. Just the one on the MP9, and only 𝐺XX actually not ready for this. Oh, 𝐺XX! He completely disrupts and erupts with the double. राउंड निकाला हुआ है Oi, oi, oi. There you अभी go. नहीं You कर said रहा है how bro important the conversion was, Chad, and it has been. अभी नहीं कर रहा है काम तो अभी कुछ भी मिल 100 lost. That is massive. A smoke criminal. This fight, this biff, yeah, perfect work with the MP9s. You can see these weapons sing. Beautiful work holding down the trigger and dismantling the final 2. And 𝙈𝙆𝘆 immediately trying to calm down the troops. This is a big round, but keep it slow, keep it tidy. This is just the beginning of map number 3. Force by back, not giving up on the force by wars. MIBR, 𝙬𝙆. He's been locked in there. Oh, and spammed on down. Lots of damage convert onto the S, or rather the T. Not the SMG. 𝙈𝙆𝘆 still has short, and you can see just 4 make it all 5 gathered here at ramp. This can usually end poorly. But you saw that early util. They wanted that space. The fact he gets spammed on through, he has to relinquish immediately here, and now they walk around the map with low HP 𝙬𝙆 and 2 flashbangs to work with. 𝐶𝑠𝑔O on the B bomb site currently on his lonesome. The rotation is quite heavy elsewhere, but as Vertigo goes, they can, quick as you like, get on over to back him up. 𝙒𝑔𝑜n will be the man in charge. Has a flash. If 𝐶𝑠𝑔O's getting pressured, expect to see that called upon. Smoke actually very early doors, just as the boost. 𝐶𝑠𝑔O could get caught off by this. False sense of security, and there you have it. The B site open for business. 𝙒𝑔𝑜n blind as a bat, already 2 across. He's trying to stay nimble, but MIBR threatening. 𝙎𝙃𝘆𝑆 does put a good one down range. Bomb down. That's already an achievement in itself, but this force by war waging on. Retake time for the CTs. You're not going to clear that corner. 𝐺XX. Oh, lazy clear. And now an easy one for 𝙬𝙗. Still 𝙬𝙃𝘆 keeping the Eagles in it. It has to all be 𝙬𝙃𝘆. There's another one for him. 3 and counting. Gotta count on 𝙈𝙆𝘆 to finish now. 𝙬𝙗 was in the smoke, still is. Exit jiggles confirmed and tagged. 1v2.
1v1, no health, no kit, तो has to get out क्या of round there. निकाल रहे हैं MIBR भाई. still jostling for control, successful on the B take. We'll see that highlighted a kit was here, but just could not find that final kill onto Exit. Jacob spoke about him having to be the closer, and by virtue of him staying alive, he gets that one done. And we wage on with these force by wars. An M4 saved. Wow, this is quite the hectic start. You got to probably go again. You got 2 saved M4s. You know your opponent just about cobbled that one together, and very early on this Match क्यों नहीं मिल रहा? MIBR seem very proactive with taking the 30 seconds just to make sure everyone's on the same page. Yeah, and I guess this is to just have a discussion of, hey boys, we were playing quite quick before and running into them against that force by, and heads up Counter-Strike is one of the things that the Bad News Eagles seem to do very well. Every time it's quick into them, Nuke, you can remember the A main push that Rigon was able to deal with. You have that saved M4 for Flatro, and तो actually ग्रीन दिख रहा है ना उस पे वो है कितना नॉइज कैंसिलेशन रखना है. मोस्ट प्रोबेबली तो यही है. मैंने सुना था किसी बंदे से. 5-7 for Scenari. It's 4 AKs on the other side. बहुत महंगे हेडसेट है साले वो. Util is Headset actually से वो a big issue here. नॉइज कैंसिलेशन है. So I think maybe they want to take the pace out of this to establish an understanding of what's on the other side. But this quick play towards B says maybe it is pacey. See how far they can get. Very quick from Turtle. अरे यार क्या वैसे तो नहीं हो रहा. They definitely are early to condition B side. Maybe it's just to try and draw some util out here. Flash forward. Scenario won't see a lot. This boost up and over. Weapon advantage for Rigon against Exits. MP9, and while the toes will be spotted here if Exit's not careful. Oh, GXX got to get out of. तेरे पीछे कितने का है? रोड 2 से 2.5 लाख के बीच. Control and come back towards the site. So nobody with a pistol is here to pick this on up. It's a great find in Turtle. He's just above you. He's just mounted on up. I'm not sure if Scenari's aware of this. Or it's Synopsy, mind you. Perfectly played here. He's drawn the rotation. They've headed back over towards A. They're calling the ramp clear. They're out of position as far as the rotation goes. Remember, there's not a lot of util, so it might just be a contact in towards B. Yeah, they're just punishing this. The Eagles might not get the early warning system that it will be the B hit, but the information has forced this rotate. 3 players here now and a flank. Scout might be wanting to take that first, just soften him up a little bit. There's one, straight to the chest. They drop it back. Cancel, but look at Rigon. He's got this rotate. Delayed them. They're coming. Charging, leaping into the spray. Rigon with the multi-kill. But the round not done yet. Exit floats through the middle. Completely detached from his teammate. As are the CTs. It's Turtle charging the bomb towards A loudly, and that, oh no, he doesn't finish it. Delay. Just needs to find it with the pistol, jumping up. Pre-fires Oh, down. nice round. Have it. We continue क्या round to निकाल रहे हैं trade भाई ये लोग? back and forth. No one is gonna leave without this constant battle. You're gonna see the reinvestment, unlikely. 4K on Exit, everyone else on peanuts and biltong. This is the thing, right, Alex? You're right in the sense that maybe an eco would be the right call here, but because the economy hasn't been able to build for the Eagles either, all it's going to take is one of the two to string 2 consecutive together to win the force by wars, and MIBR know that. They've invested again. Exit with the AK, the rest with pistols. Util light, but they made it work once. They maybe can make it work again here. Out mid quick. Very quick. One quick glance, Rigon's had enough of that. Notice the poking nature that MIBR are getting away with while Bad News Eagles don't have all the stop protocol utility. Rigon's going to walk into this. 1 and 2. Great little spray down there from Rigon. इसे कहते हैं गेम सेंस भाई. पहुंच गया मिड पे सीधा जाएगा. But I see a cello CC. I usually start to have some faith. Nice find. Rigon is not losing any of that form. Again with his hands off the keyboard, dude, the round is still live. He's loving what he's doing. He's just proud of himself. I don't think I've ever seen anyone react in that fashion with hands off the keyboard. We've all seen an electronic moment when he's jiggling a corner with one face. क्या हुआ ये? सबका डिस्कनेक्ट हो गया? But I've never seen someone get a kill, be happy with it, फिर and disconnect हुआ. gesture after getting a couple of kills. This is remarkable stuff पता नहीं मैं. And as soon as you know, dismount the first, you just almost know the second is a gimme. And the round's not over. Yeah. I don't know what he's saying. I'd love to know what's going through his mind in this moment. He's just in their head. He knows what was coming. Well, timeout called, and we talked about it. Chad mentioned it. Stringing together 2 was the magic formula. And B&E are the ones to strike it.
भाई इसके पास रीगॉन का जो नाइफ कलेक्शन है ना, वो देखना भाई क्या शानदार है। रीगॉन मतलब बहुतों के पास है वो। M9 सैफायर है ना, उसके बाद ब्लू कलर के ग्लव्स, पैंडोरा बॉक्स, उसके बाद ब्लू कलर की फॉस्फोरस। फीनिक्स केस कितने का चल रहा है, कुछ पता है क्या? क्या? ऑपरेशन फीनिक्स केस कितने का चल रहा है? पता नहीं अपने से रैंडम में इसके इन्वेंटरी में पता है फीनिक्स केस पुराने, सबसे पुराने वाले पता नहीं कौन कौन से केसेस भरे पड़े हैं इसके भाई। हाँ ये पुराना बंदा है ना, हाँ इसे सेव कर रखे होंगे। इसने सही सही कर रखा है इन्वेस्टमेंट यार। तो क्या हो टी साइड मिल अपने में आया हुआ एक शूटर रैंक का। मैं अपने वाले चेक कर रहा हूँ ना, अब उनका चेक करो। आया एक तो मेरा वो बग हो जाता है यार, और नहीं शूट सामने तो नहीं है अपने। क्या है? नहीं अपने वाला ही देख रहा हूँ मैं खोल के। क्या हो गया भाई? ओवरले को चल जा भाई। और फिर कनेक्टेड हो गया, मैं कुछ चेक ही नहीं कर पा रहा। अपने वाले का चेक कर दो तो कर गया बस। अपने वाले की रैंक है TN2 या MG1 रैंक है 0.92 KDA। ओ भाई MG1 है, बहुत बढ़िया भाई। उम्मीद ही नहीं थी क्या रैंक तो 0.9। अभी खुलेगा एकदम से मेरा ओवरले, चूतिया साला। कौन है? सस्पिशियस लग रहा है क्या उसमें से कोई चेक? नहीं सारे खेले, कोई सस्पिशन नहीं, बस रैंक चेक कर रहा था क्या रैंक है इनकी। बजरंगी दल। ये तो शायद ज़ीकी इसका नाम शायद वो था। अब तो कमाल अच्छा। हाँ और जल्दी बोल जाता बोल रहे जी भाई। चलो बढ़िया MG1 या ब्रो फुल मार्क्स। और MG1 MG2 सारे ग्लोबल रह चुके, ठीक ठाक खेलेंगे, कुत्ते की तरह मारना। अच्छा ही खेलेंगे भाई। मैं भी MG1 ही, ऐसे कोई डरने की बात नहीं। क्लियर कर देना तुमने कार। सेकंड प्लान करो, मेंट चल जा। मेंट है तो तू सीटी कर रहा है। ये मिलने के साउंड है। नाइस राउंड है, नाइस राउंड। बहुत पूरा मारेंगे इनको, कहाँ है? ढीला नहीं छोड़ने के इनको, कंडमरों को। मैं कंडे चूती है, चलो नहीं था। अरे जंप क्यों नहीं हो रहा है? तभी सोचू साला जंप ही नहीं हो रहा। मिड पुश आएगा ब्रो, नीचे से मार के जाएंगे भाई। जी है को वाइट बॉक्स है, जी और वाइट बॉक्स तेरे राइट में एक ही पड़ी है। सिटी वाइट बॉक्स नाइस। ए साइड और वाइट बॉक्स भाई, एक ही पड़ी है, एक ही उठा लेता। ग्रीन तेरे राइट में भाई, मिड जहाँ मैं मारा था तेरे बगल में, मिड में। सेकंड चल रहा तो इस पर भरोसा नहीं लग रहा है मेरे को। मैं बोलने ही वाला था कि इस पे भरोसा कम है मेरा भाई, तो वहाँ पे बोल रहे थे एक ही उठा ले, इसने उठाया एक ही ले गया। नाइस यार, क्या ट्रेड लिया भाई। ट्रेड नहीं बोलते इसे, छुट्टी है। बच गया मैं, नहीं तो कूद गया सही टाइम। एक ही सेव कर लोगे ब्रो।
मिड डोर है बड़ी मिड जी गैराज भाई गैराज तेरे बगल में तुम्हारा था। हाँ तो वाइट बॉक्स मारेगा। नेट चले गया तुम। हाँ बीच हो रहा पीछे उसने ले ली थी इसलिए दिख। अरे सुन तो से मेरे भाई तेरे बगल में ही तो मारा था तब गैराज में चिल्ला रहा हूँ तेरे को इतनी देर से एक ही ले ले मेरी। नहीं तब लेना चाहिए था उसके बाद नहीं दिखे। हाँ तो उसके बाद कैसे दिखेगी तू चेकर चला गया जो रैंडम है क्या? अच्छी उठिया भाई रैंडम बोलता कि उसके बाद दिखे नहीं तब लेना चाहिए था। उसके बाद कैसे दिखेगी चेकर में घूम रहा है फिर मिड नेट है। भाई कोई दिखे नहीं था। वेंट्स पे स्मोक करा सीडी दो फ्लैश है चलो ना। वेंट्स रुकना वेंट्स रुक ओए मेंसिकल वेंट्स रुक तू कहीं मत जा। साइड क्लियर है हेवन है बढ़िया आओ और गंदे कर सीटी स्काउट ठीक एक हेवन है हेवन लास्ट है। अब उसको पता है ऐसे मॉडल मैं आपको दिखाऊंगा पीओवी में पता अरे इससे हटा के यहाँ पर और फिर मेरे मुंह पर आ गया सीधा। क्या हाल है बस भाई दर्शित भाई एक नंबर। हेलो लिंकन हेलो बूझ देना मेरे को बीच या तू ले या तू ही दे तेरा स्पॉन है ना। एक और मेंसिकल बैकअप दे मैं। अबे तू कहीं पे देना तू एक को तो मार। एक है पे मैंने 64 ऊपर वेंट की तरफ आ रहा है। हां बाजू ऊपर का तेरे को देना साले मैं ओपन में हूँ। मैं जी वाले को मार रहा था तू हाईवे वाले को मार रहा था दोनों मेरे को मार रहे थे। दोनों ने मेरे को मारा भाई हेलो दोनों तेरे को नहीं दोनों ने मेरे को मारा। वो तो तू चूतिया है ना मुंह। एक्सप्लेनेशन मत देते हैं भाई। अरे सॉरी मेडिकेयर मल्टीपल फ्लैशेस लो है ऊपर है सीटी मत जाओ। हाँ मिड मारते चल मिड फ्लैश करो इसमें से निकलना। मिड बॉक्स फ्लैश करो ही चला गया। हेवन मारो है यहाँ पे बैठा है भाई 54 टैग है पूरा देखा मैंने तो भाई वो 54 पड़ गया वो भी बहुत बढ़िया बात है आपसे। भाई 54 कैसे पड़ गया मेरे को तो नहीं लग रहा था। 54 ओए यार 33 एन स्प्रे एन नहीं ये इंडियन स्प्रे है। कर लेते हैं अच्छा सा बाय कर ले फोर साइड एक को बच्चे का डीगल लेना हेडशॉट। हां डीगल है मेरे पास है क्या है बहुत बढ़िया है डीगल है। नहीं ऐसे दिखती नहीं है दूर से दिखती है। तो फ्रेम लगा लूं क्या फ्रेम करवाऊं फ्लैश दे के आएगा ये क्रॉस फायर पे खड़े रहे
उधर ही कर। बहुत ज़्यादा दूर चला गया साले। क्या ब्रो? ये मैं तो कुछ नहीं है। अकेला मत खेल ब्लू, टीम के साथ खेल। आना इधर चेकर मारते हैं इधर। शायद बॉक्स के पीछे भी है तो मार उसको तो मार। शाबाश। नाइस। आ जा एक तो आ जा। गन लेने का है। जाता हूँ। हाँ एक मेरे को लग रहा है राइट में बैठा है इधर देखना। उस शॉट। गन ले लो गन। साइड साइड किधर? साइड 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 34 टैग। साइड के बॉक्स के ऊपर है। नहीं डिफॉल्ट चला गया वो। 34 टाइम से कल एक बुलेट पड़ती तेरी हेड पे फ्री हो जाता हूँ। वही तो। सही बता, ऐसे हो जाते हैं क्या? और क्या हो जाते हैं। और क्या भाई? मैं जो अनपढ़ है क्या? पहले बताता भाई, मेरे को तो पता ही पहले बताया था मैंने, तूने मारा ही नहीं। लो चलो चलो लेट्स घुसते हैं अंदर। आ जाओ। किधर? अरे पीरे चेक और कर दो। ब्लू बी पे। चेकर आते हैं। हाँ भिड़ जाओ, आपस में भिड़ जाओ। मेरे को पीछे कर दिया भाई इन्होंने। चेकर वालों को शाबाश नाइस यार। करो बस शाबाश शाबाश घुस करो। रुक 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 रुक। रुक हेवन वाले को वनडिंग मार। सिटी हेवन है, ग्रीन सिटी हेवन है। भाई मैं नूब हूँ। हेवन हेवन और सिटी। विम्सिकल इधर बैकअप दे दे। वो शॉट यार। सिटी लास्ट। सिटी ब्रो सिटी ग्रीन। ऊपर है ऊपर। सिटी विटी क्या है? लग नहीं रहा मेरे को। पिक करके मारो ऊपर है साला। सेव कर रहे। सिटी सिटी जी 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 जी। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। हेवन ऑफ पड़ी विम्सिकल। क्या खेलते हो भाई? ऊपर नाइस द प्लीज जो इधर दे ऑफ दे। एंट्री देख रहे हो? एंट्री दिलवाई भाई। टूटी है, मैंने एंट्री ली थी। दे 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 दे। मैंने एक बंदे को वेंट्स में मारा पर वेंट टूटा ही नहीं बे। तू दे। जो अबे तू ऑफ दे चूती है। तो डीजल लेके भाग गए हो। शाबाश जाओ जाओ फ्लैश नहीं करूंगा। मिड क्लोज लेफ्ट साइड। हेडशॉट है। मिड क्लोज बैंड। एक और चुत। एक और है एक और। बम उठा ले डीले लंड। जब से गांड फट रही मॉली था ना इतनी देर से। सिटी कर स्मोक हो गया। कर दे भाई। हेवन कवर दे। हेवन बैकअप दे। पड़ती। हेवन आए। सिटी लास्ट। 91 ओ चेक 91। एक एचपी ब्रो। जाके मार एक एचपी सा। इनको देखो इनका पीओवी देखो। आज को वेट कर। बाय 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 बाय। ब्रो फर्स्ट आईडी में क्या रैंक थी? भाई डीएमजी है वो, हल्के में ले रहा तू। नाइस। ऑफ चला भाई, मेरा मन नहीं कर रहा। लाओ मेरे को दो। इधर चूती है। तेरे को आती है ऑफ देखी है तूने कभी? है ना? देखिए बता तो सही। देखिए क्या कोई चलो शाबाश। ये देखो हो सड़ेगी मेरे को क्यों मारा चीची। अबे साइड पे भी बैठा है।
बीच में मारा मेरे को भाई। तू चूती है, तूने मेरे को क्यों मारा? ऑफ पड़ी है लेफ्ट। ऑफ नीचे हीरो इतना क्या खुश हो जाते हो भाई? अरे ऑफ मिल जाता तेरे को मेरे भाई। हाँ तो इसलिए बता देना। दे दे अब दे तो सही, दिख गया तो हैंड के लोड रखी ले इसको वेट करता है। इसको करने से बाद इसको वेट करता हूँ। मार दे इसको, मार दे। नहीं वेट करेंगे फिर। पीछे गिरे ठीक है क्या? थोड़ा सा वेट करते कि हैं? वेट ही करते। हाँ मिड क्लोज है, अंदर आ गए, गैराज के अंदर है। आगे चल ग्रीन, आगे चल, मैं पीछे से आ रहा हूँ। इधर आ भाई बोले यार कहाँ से सीखा? किधर वो देख राइट में तो चाचा क्या सही है ब्रो, सही है ब्लू, सही जा रहा है भाई। स्क्विकी खुल गया, बता तो दे। स्क्विकी है नहीं, स्क्विकी था भाई। एडमिरल को देख रहा हूँ। ये बंदा पता नहीं अपना क्या है ब्रो, देख बी पड़ता, बाकी के पता नहीं। इसको जान, इसको बैठ के उड़ के वेट कर, इसको बढ़ने दे पहले। इसको वेट कर ले भाई, जब वेट करने के लिए बोलते तभी वेट नहीं करता। हाँ हमें करते हैं जानबूझ करके क्यों किया? हाय बेबी ब्रो, तेरे सामने स्क्विकी खोल के अभी मार के गया है लू। हाँ यार आवाज नहीं आया। ग्रीन एक देना, ग्रीन एक दे चूती है, पूरा इकोनॉमी डिस्ट्रॉय कर दे मेरा। दे इधर एक दे। एक ड्रॉप चाहिए क्या किसी को? नहीं तू रख भाई, तू रख, तेरे पैसे बचा तू। हाँ बचाता हूँ, एफडी करा लूँगा बस। हाँ वही करा ले। और कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है क्या? हाँ है, म्यूचुअल फंड्स, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। दे बहुत बड़ी बूस्ट। मार यार, मजा आएगा। नीड करो। फ्लैश दूंगा पापा। दिया फ्लैश। दिया। एक ही है, यार देख रहा है एक जी। क्या क्लियर है? एक क्लियर है, एक जी है। क्या क्लियर है? ए लोड है। ए सिटी मत में चले जाओ शांति। 78 जी 7 आ। अबे ये तो साइड पे है। सिटी ओपन है। खेलने दो उसको उसके साथ। पेमेंट प्लान दिया है ना? हेवन दे आती है अपने। भैया वो वॉक करके खड़ा रहेगा तो वॉक करके खड़ा रहेगा तो कैसे आएगी? वॉक करके आता हूं मैं। हाँ क्यों नहीं आ सकते? नहीं आ सकते भाई, अलाउड नहीं। स्टेप तो नहीं रखता उसमें। आगे झुक के चलना पड़ता। चेकर रुक जा, बच जाएगा, यहीं रुक जा, बच जाएगा, रुक जा वहीं पे। पड़ गया अब तो। अरे यार लगा ही नहीं भाई। 77 लग। लड्डू ऑफ मेरे को दियो इधर। आटू को मत पकड़ाइए इनको। यह चूतिया है भाई, ये ग्रीन जाके बैठ रहा उधर। क्या करो उसको होश ही नहीं है कि उसको चेकर के राइट से मारा। क्या स्मोक है? क्या स्मोक है पीछे? ऊपर जनरेटर तू मत ज्यादा एमसीएल फाइट लेंगे अपन। अरे डरते थोड़ी। 10 सीटी पे बैठा एक सीटी आ रहा है। यार फाइट ले। फाइट एमसीएल फाइट ले। सीटी 1 टैप एमसीएल।
नहीं नहीं ले तू ले बहन डरते थोड़ी फाइट ले फाइट ले ही खेलेंगे प्लान कर रहा है भाई इसके ब्रेन डेड हो सही तो मारो तक तो रखो अब तक मैं बक्के मारूंगा तू ले मैं लूं फाइट ले खेलते पूरा वो एकदम पुश करके खेलना प्लांट मत करियो टाइट डिफॉल्ट 80 टाइट अबे तू ग्लॉक लेके आ रहा है मेरे पीछे मैंने टीजर भी मेरे पास अच्छा ये थे ग्लॉक वाले पीछे निकल गया अच्छा 8 ये देखो ये ब्लू तो अलग ही है प्लान कर दे ब्लू प्लान कर तो उसको बेचारे को पता ही नहीं उन्हें फ्लैश करके बता दे कैसे जा रहा है चमकता हुआ कैसे जा रहा भाई है इधर देखो ना कहाँ देख रहे हो ग्रीन फ्लैश निकाल दे तेरे को ऑफ दे देगा डिफॉल्ट डालिए क्या थी अरे आए होना चाहिए करना चाहिए था एक ही दे इनसे इससे पीरेस करेंगे नहीं एक ही दे वरना मैं स्काउट बैक कर लूंगा मैं लंडी नहीं चला रहा वो तेरी झांटू सी डीगल दे रहा है चलाएगा जब भी दे रहा है डीगल में दो नहीं डीगल है मेरे पास अमीर लोग जाना रुकना है मत अरे रुकते ही नहीं है बंदे यूटिल भी नहीं डालेंगे और बता ट्राई पुश वो मंदा हो गया फ्लैश में भी नहीं रुकते भाई रुकते ही नहीं है कहाँ जा रहा है बीच ये देख पलटी मार गया भाई पलटी मार गया अब तो मानते ही नहीं हम तो नहीं मानते थोड़ा सा रुकना पड़ गया अरे हम तो मानते ही नहीं अब तो कितने भी किल ले कर दे प्लांट बेस टीम पे अरे यार शाबाश क्या खेलता है भाई के लिए मैं ही मर गया क्या खेलता है बीच यार क्या खेलता है बचने के लिए आगे जा रहा था अरे क्या खेलता है फिर से भी मैं सीधा चेकर वाले को पिक लेता नहीं यहाँ ओ कोने में खड़ा था साला लेफ्ट कॉर्नर में नाइस यार अभी रिकॉर्ड करता हूँ क्या रैंक थी CMG थोड़ा सा 19-20 हो गया 19-20 हो गया थोड़ा ये ब्लू की क्या रैंक है अपने MG1 नोवा SMFC भाई SMFC MG1 उस जो भी पोजीशन खेलते हो ना सारी पुश करके खेल कुछ जाना का एकदम घुसने का रुकने का ही नहीं उनको पता तो लग चाहिए MGL DMG खेल रहे सामने क्या हुआ क्या बात हाँ सब मार दे अरे तेरा POV कहाँ गया हाँ ये वनडे शॉट अरे तू मर गया क्या हाँ अबे यार वो तेरे चक्कर में मेरे को चिपका गया
उसने एक राइट में मारा सिर्फ। ये देखिए 61 टैग है भाई। ओहो मार दे ग्रीन, इसको मार दे। मैं लो, पीछे जा पीछे जा पीछे जा। अबे क्या कर रहा है, एक ही तो बचा है। इनकी स्ट्रेटजी करने को दो। पीछे हो जा पीछे हो जा पीछे हो जा। पीछे पोल पीछे नहीं होता। M4 नहीं, गरीबी चाह रखी। P90 लेके चलते हैं। तेरे को डीएलटी दिखाऊंगा अभी मार के। क्या तेरा POV इंस्पेक्ट ही नहीं करूंगा मैं भाई। और अगर तू अकेला भी बचा होगा ना तो भी कंसोल खोलूंगा। नाइस यार ब्लू। उनकी टीम से खेल रहा है क्या? वो 2-2.5 बंदे थे। तूने भी तो मारे थे भाई अपनी टीम से। हाँ उनकी टीम से खेले। तूने भी तो मारे थे, उसको क्या कह रहा है? वेंसिकल चूती है। वो भी फ्लैश करा था। मैं तो मारता नहीं भाई इन्होंने तो जैसे भी आपको स्मोक में जाते थे डक करके मारा था। अरे वो तो देखा मैंने। अब पड़ गया है ना, हो गया फ्लैश हो गया। गैराज पे 3 देख फेक मॉली फेक। ऐसे नहीं। गैराज पे 2-3 जने थे, ये पे मदद नहीं हो सकती। नीचे डालता मॉली। नीचे डालो दे। हाँ इधर डाल, इधर। हेलो पे उधर के चला गया। मेरे पे पीपी भाईजान बड़ी है, ब्लू उठा ले। मैं फिर से पीपी पुश कर। मॉली बढ़ावा हेडशॉट जा जल्दी। अरे वो इतनी दूर कहाँ डाल रहा है? ओ बॉल क्या? पीपी भाईजान वोरी मैं वो है UMP भाई। अरे पीपी भाईजान मैंने बाय करी थी इसको बोल रहा तू छूतिया है। देखी भाई UMP देखी, UMP थी वो। इन्होंने आगे वाला तो देखा ही नहीं मैंने, तो सिर्फ गैराज के अंदर वाली देखी। वो बहुत ठीक है। उछल पूरा हो गया प्लेस है। मर गया मार से। ऐसे उठाते ना फिर आधा गन फेंक दे फिर उठा ले भाई। इसमें से नहीं निकली। पड़ी अरे अब मेरे से 4 जने बैठे घर बना के। मारा मैंने एक मार। भाई वो मर गया, वो बहुत बड़ी बात है। जिस हिसाब से पीक ले रहा था ना वो। ये भी खरीदनी पड़ेगी भाई कौन सी चीज थी? पामास देख ही लिया। एको करते गेगन बाय करेंगे आज। बीमेन रश करें। कितना लॉस बोनस है? 1900 है ना। 1900 में तो आ जाएगी। एक टिकल तू मेरे को दे दे। तू मत करिए, मेरे को दे टिकल। नहीं छोड़ दी मैंने तो छोड़ दी। P2 डाल भाई ये किक होएंगे अभी देखना। आ भी क्या होगा इसके? डूइंग मोर डैमेज। वही तो मैं वेंट की तरफ आ रहा है। वेंट के अंदर वेंट के ऊपर नहीं गया। अंदर नहीं गया। वेंट्स के ऊपर ही बैठा। ये क्या है भाई? भूतनाथ है। ऐसे भी स्टिकर मिलते हैं क्या भाई? आजा नेक्स्ट आजा। सेज खेल ले आजा। कौन आ रहा है? लेकिन ट्रोल कर रहा हूँ, ध्यान रखना। इसे तो नहीं लगाना मैंने कहीं पे। ट्रोलिंग ऑन फेसिट है। फेसिट नहीं खेले बाद में, यहीं पे ट्रोल कर। कबूतर मैन करो गेगन बाय करो शाबाश। भाई तूने मेरा पीछा किल चुराया था। 20 का था भाई वो।
क्या प्रोफेशन है आपका? प्रो मैं फ्रीलांसर हूँ, फ्रीलांस ऐप डेवलपर। मैं मदद के लिए हूँ। ओके कोई इशू नहीं, फिर ठीक। तो कौन चूतिया है? मरने का जो को तेरे को। अरे नाइस। पर तो गया नहीं, -58 एक और है। वाला ट्रिगर बैठा हुआ। ए जाओ, ये तो मदद चाहिए होगी। ये कोई नहीं है भाई। तो किसको मदद चाहिए? ए साइट को मदद चाहिए। नहीं दे रही हमें मदद, नहीं हमारी तरफ से तो मना है। व्हाइट बॉक्स पे M4 मिलेगी। हम इसको वेट करते हैं। ऊपरी ऊपरी ओरी 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 मिड पे भाई, ये इधर ही बैठा है। नाइस वेट यार। हां डर जो है ना बस प्लस निकाल दो, मजा आ जाएगा। ए प्लांट होने पे मैं थोड़ी यार, M4 उठा ले, ब्लू M4 उठा ले। मैं तो नहीं यार, मैं तो प्रेशियस गिगा नेट। मैं से आ रहा हूँ, घूम के जल्दी मार ब्लू। है ना? आ रहे गिगा। एमएन दिखा भाई। वल्ला अभी भी भाई, अभी भी मैंने उसको बोला ना एमएन आ रहे जल्दी घुस के मारो। कूदता गया अंदर, सीधा घुस के मर ही गया है। मर गया सीधा। तुम गड़ मारो, ये जाओ ना, मेरे पास गिगा नहीं ना, बी देख लूंगा मैं। गाइस वी आर लूजिंग इट। अच्छा भाई वो बता रहा है अपन हार रहे हैं। तुम लोग भोंसड़ी वालों जिताओ, तुम बॉटम फ्राई करो, मैं तो टॉप। है ना आपकी टीम में कुछ ज्यादा प्रो, वो जिता देंगे। बहुत ज्यादा फर्क है यार अपने है ना स्किल्स में। 50 किल का फर्क है भाई। हाँ वही तो 50 का अंतर है। 50 का तो है। बुश किया। अरे की बात है। वेंट की तरफ वेंट आ गया। कोई बात। हाईवे भी आ गए भाई। नाइस यार। अरे क्या गिरता है हेडशॉट। 64 टैग है। ओए पीछे बोला तेरे। ये देखो भाई, अरे की ट्रायल चल रहा है भाई। आज हमारे कॉलेज में टूर्नामेंट था, 10 के प्राइस फुल चाहिए आए थे। आज 6 बजे तक मैच चली, अच्छे मैच किया। तुम जीता तुम? तुम्हारे पास पैसे नहीं, गरीब हो गए तुम लोग। TBS है। What the fuck? ये वाला कुछ नहीं। सही है भाई, एब्रीवेशन। नाइस मूव हुआ है, दिखाना मेरे को। एक बुक किया। 82? What the fuck? 82-70? 82-17. आठ भाई 82-78 मारा, ईजीओ को 82 और ईजीओ को 78 और बजरंग दल को 82। हमारी टीम ने डाली बिकॉज हम ऑर्गेनाइजर्स थे। अच्छा ये भी ठीक। क्या बोल रहा है? तुम मोली डालो ना। एक को गैराज में मैं डाल रहा हूँ, एक ऊपर डाल दो। ये तू टायर कर रहा है। पता है, सेकंड आईडी है ना ब्रो, चिल मार। लगता है रैंक अप करने आओ। उठा पैर भाई, ये था वो गेगन वाला। भाई ये पे ना बहुत सारे मॉल ने डाले, बता नहीं सकता, पता है। मेरे को गेगन वो बचा है चोद। अबे तू नूब है भाई। अबे मैं गेगन उठा रहा था, पहुंचा था मेरे को। ठीक है तो पहले बोलता है तो करवाना चाहिए था ना। ये बोलने वाली बात है। देख छोड़ दिया मैंने।
लगे ट्राई कर रहा है। हाँ भाई परछाई दिखी मेरे को उसकी। है ना देख अभी लास्ट दिखेगी तेरे को तेरी खुद की। हाईवे मार हाईवे नो चुप 8 ऊपर कहीं क्रॉस हो गया शायद। हाँ वापस गया भाई। वेंट आया। वेंट क्यों आ रहे हैं बॉम्ब तो तेरे पास पड़ा था ना तेरे को आ गया चेकर आ गया फुल ट्रायड चल रहा है टैग है दोनों आ रहा है क्या मारता है गैप है लो लास्ट देख क्या राइट में अबे नहीं दिखा दिखाई नहीं भाई अंधा है ये। कोई बात नहीं बीच कोई बात नहीं इलाज होगा तेरे एक दिन स्पॉन्सर तो मैं नहीं करूंगा लेकिन फिर भी होगा डोनेशन ले लेंगे भाई। हाँ डोनेशन ले लो टेंशन ही मत ले सब्सक्राइबर ने तेरे इलाज का डोनेशन लेंगे लेकिन वैसे इलाज होता भी है क्या होता है होगा चेंज हो जाते हैं आजकल चेंज नहीं होता है गधे का दिमाग डाल लगवा रखा है दोनों ने लग रहा है मेरे को। हाँ लगवा रखा है तेरे को भी लगवाना है वो आई बिमसिका टट्टी के पैकेट भाई 0 बैकअप 0 बैकअप 8 अरे मैं नेड कर रहा था रे नहीं लेना था लोग ओलंपिक्स ही जीते वो भी ओवर टाइम पे अच्छा ये चलेगा ऑरेंज भाई हेलो तो क्या तेरे को ए साइड ट्रिपल है भाई कहीं तो है ट्रिपल प्लांटिंग टैग है टैग नाइफ कर दे नाइफ कर दे 73 नाइस है दियो तेरे गोबर का भोसड़ी का बैकअप एक और गेगन खरीद के दे गेगन दे भाई गेगन दे अरे हाँ गेगन भाई पास कर थैंक यू पास कर चूती है किल कर दूंगा तेरे को जल्दी दे कर दो ले रुक हाँ तो हल्के में ले रहा है हल्के में ले रहा है भोसड़ी के ओ 14 जीत रही भाई Now they retreat. Now they get it open. Rigon can activate. Woody is posted. Oh, bye. Rigon precise and charging now, trying to thread the needle through the flames. 𝙬𝙗 does equalize, but oh my god, it's hectic. Smokes are down. Great shot out of 𝙎𝑃𝑋. Neutralizes 𝘾𝙊 on headshot. And Scenario already wounded. He's limping to try and provide support as best he can. They fully rotated. The bomb's going back to B right now. If 𝙎𝑃𝑋 can sell it, Fun Flatro has got an open runway. The smoke will towards elevator. And he's changing his mind. Exit's been pulled on over. They've drawn the rotation back. They're not biting on this. भाई They think it is going to be B. One back to construction, one towards heaven, one towards B. They've strung out the defense right now. This is perfect from the Eagles. अरे नहीं बोल रहा था ना मार के देखो ले डेली बहुत सड़े 30 मिनट के टाइम आउट से क्या होगा मेरे को 𝙬𝙗 has no idea what lies around the corner. Scenario is going to clear such a power position, but the low HP. The flash is bad, and 𝙬𝙗 can strike. Bomb uncontested. जीतो भाई जीतो मैं रिगोन के साथ हूँ गाइस आप लोग किसके साथ हैं लमाओ तारा था भाई पीजी के में हम तो मरते रहते हैं ये तो कुछ भी नहीं 7 दिन का अबंडन लगा था एक बार तो Flatro does find the first, but it is onto 𝙎𝑃𝑋 looking for impact. He's lined up for the knife, lined up and ready to strike. What are you doing? Goes to the left and the right. They are on it, and that's a bit of a heartbreaker. He was so close to it, and 𝙬𝙗 gives him a taste of his own medicine. Orp retrieved in good measure. Now IBR extend play. Trying to keep themselves loud over here, but you can see it's stressful moments right there. The fact that they get so strung out, you can see 𝙬𝙊 hand pressed to the face in that moment. And this is dicey. 𝙎𝑃𝑋 was hoping to whittle down the clock as much as he could here. Didn't want to give away the maneuver he was going for. So low on HP. Had to hit this one and just can't. Cops a knife for his trouble right there. And 𝙬𝙁 showing him how it's done. Saves that AWP and gives it back to Woody, who found it open for them in the previous. Could that be the key to success right now for MIBR? Woody activating on this big green. There are angles to peek into that boosted spawn. 𝙎𝑃𝑋 posted up to provide support on short. 𝙬𝙊 heading towards the 𝙎𝑗. That's the angle, and Woody does bait the shot, lives on. Orp confirmed ramp, Molly will deny. Nice tickle on the nade, but
With that molly as the smoke fades, that's actually very nice from the Eagles. It should at least mean they can focus their attention on Woody. Flashes rain in. Nothing initially. It's likely to be an AWP here. Over the edge of the smoke is the rifle spray. 𝙬𝙆𝙆𝙀 backs away. So much at stake on this opening move, and you can see 𝘎𝙆 committed. Does nearly take two. Got to stomach a disadvantage early now for the Eagles. So close, yet so far. MIBR have definitely found their voices. Yeah, and retaining that space over towards A is huge. The fact that they still have A ramp info, they can rotate and bolster B to help exit out. Got it. Yeah, spots him out. More damage done. They really got nothing going on. Exit unwilling to commit to an aggressive maneuver when he's got this advantage. Forced in by the flames, and it is the end of him. Two more here. Oh no, 𝙎𝙆𝙆𝙀 has got him. It's got to be 𝙬𝙆. He does find the first. They are low. Turns the flash. Flames on his feet. He has to find something. It's more from 𝐶𝑛eri. The impact fragger. Now they have the advantage, and Rigon's ready. It's just 𝙎𝙆. 15 looms. Great flash. Caught out. 𝐶𝑛eri can't finish. Can the clutch come through? 𝙎𝙆 3 in the round, looking for his fourth. 𝙎𝙆𝙆 will not be caught out with the AWP this time. No knife hijinks. Bomb is half gone. Likely on quad side. Using that smoke is 𝙎𝙆. Gives him a sound cue. 𝙎𝙆𝙆 has got that luxury now. Can jiggle, can play. And there's 𝙎𝙆. There's the fight. Misses it initially. Running out of time though. And that should be it. 15 to break B. Turning this one around. Turning it on its head. BNE. One round away, Chad, from the legend stage. भाई रुक जाओ बस ये वाला राउंड देखना तो भाई ये बस फ्री होने वाला भाई लाइक करो तुम लोग भाई क्या शानदार मैंने भी गेम प्ले देखा है यहाँ पे भी गेम प्ले चल रहा है बस एक kill away from major spot एक round away major legend major spot but the key to BNE this entire time this entire series is their pack mentality and their trading their individuals you lose one well you can't stop them all. Oh my god, 3 MP9s it's going to be a fast B. It's very quick. You held it by the flame. Don't have to overcook it here. 4 leaning B early. It's 𝘖𝑁OPSI the exception. He's walking out mid now. Hello. Under control. He's already taking flight towards construction. Got nothing to report. नहीं 30 मिनट नहीं 2v2 खेलेंगे अभी 2v2. Whoa, huge gap. I think the hesitance of 𝙎𝙆 could come back to haunt him. He turns away just as 𝘖𝑁OPSI slips so many targets. Got 𝙬𝙆 down. 𝘖𝑁OPSI has gotten under their skin. Behind enemy lines to be addressed now. 𝙎𝙆 pulls us back into an even keel. Just on the edge of the smoke. Rigon, 𝙎𝙆𝙆 both posted. Doesn't have the vision, doesn't have the info, but sprayed nonetheless. It's Flatro. 2 clicks of the mouse for Eagles to realize the Cinderella story, to find that glass slipper, and to shatter it was 𝙎𝙆. He's gone. It's only Woody up against an AWP. Flatro's done it, and so have the Eagles, soaring to the legend stage. Magnificent. There isn't a human being that cannot empathize and celebrate with them. Look at their faces. It says it all. Brings a tear to a grown man's eye. This is what it's all about. This emotion, a team without an organization has come all the way. This is what the majors are about. Against all odds, hard work, determination, hours after hours of this video game, something they love. And you can see it, the passion. We knew that there were... Getting over it off. हैं? Getting over it खेल रहा है क्या फिर से? कौन? कैरी का देख रहे हो ना किसका देख रहे हो आप? भाई चिवती है। भाई अलग ही तो नशे करता है क्या? मेजर स्पॉट की बात चल रही है इधर। मेजर का वो स्पॉट मिल गया उनको BNE को। आइसफोल्ड लगाता हूँ। लोगों ने देखा होगा ना आइसफोल्ड कौन सा वाला था ये वाला शायद सेम देखिए 32 स्पॉन स्मूथ लैंडिंग कलर करेक्शन ऑप्टिमाइजेशन ये वाला चला के देखते हैं आगे हाँ गाने भी है ना अरे कस्टम चेहरे मादर छोड़ ये वाला था शायद
हाँ ये वाला था, ये वाला। अच्छा कॉम्पिटिटिव पर क्यों नहीं? इंशाल्लाह ईगल्स प्लेड वेल। ईगल्स ने भाई गांड तोड़ दी भाई, क्या भाई मतलब तगड़ा है भाई, इंसेन। ओपन क्वालिफायर से आई है टीम लेजेंड स्पॉट तक, ओपन क्वालिफायर से भाई। ओपन क्वालिफायर में बहुत भसड़ होती है, छोटी मोटी हर आंटू आंटू टीम में सबको हराना पड़ता है। फिर उसके बाद जैसे तैसे करके RMR में पहुंचो, फिर RMR में जो वहाँ की टीम है उनको भाई ये क्या है? अच्छा फिसलने वाला है, वो है ये भी ठीक है भाई। थोड़ा चूतिया वाला आइस पढ़ ले, लेकिन भाई तो चूतिया वाला आइस पढ़ ले भाई। नहीं नहीं रुको 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 रुको, मेरे को आइस पढ़ ढूंढने दो। ये तो चूतिया वाला आइस पढ़ लग गया, ये वाला था शायद, हाँ यही वाला। शिकल आ गया, कबूतर भाई बीस्ट आयो, जोइन 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 फटाफट फटाफट आओ गड़बड़ हो। अच्छा तुम्हारा लोडिंग हो ना, डिस्कनेक्ट करो भाई। कबूतर भाई को डिस्कनेक्ट कर दो। और बीच चूती है शाबाश। क्या टीम रखे? मैं कबूतर भाई तुम दोनों, ठीक है फेयर टीम। बोलो बोलो भोसड़ी के। हेलो हेलो, हाँ चले जाते हैं लोग गड़बड़ है। हेलो हो रही है मेरी आवाज? हाँ ये है। भाई ये गनों पे ये क्या आ रहा है? ओ परछाई आ रही। तो ये क्या लगा दिया? आइस पॉट आइस पॉट। आइस का है? आइस गिर रही है ना ऊपर से, दिख नहीं रही अंदर है। दीवार पे आइस वाली चाहिए भाई। भाई वो वाले मैप है ना, उनमें वो आ ही नहीं रहा यार। वो वाला मैप मिल नहीं रहा जो एक मैंने सब्सक्राइब कर रखा था, और बाकी में वो आ नहीं रहा। पड़ती है क्या? खड़े हुई खड़े रे खड़े रे खड़े रे। पड़ी क्या? नहीं पड़ी ना, तो मतलब ये वाली बॉल पे बंदे। शॉट ऑफ किधर की? भाई शॉटगन ओनली खेलेंगे इसका, ताकि पास आना पड़े। तो शॉटगन ओनली, कोई सी भी शॉट। 30 मिनट का शॉटगन मैं लूंगा, ये वाला। साइड से आ रहे कबूतर भाई जी। इजी सस्ता इंटरनेट है क्या बीच? ये देख एमसी कल के तो अच्छी आ रही है। आ गया हूँ। What the hell? भाई ये वाली है, सॉर्ड ऑफ पड़ेगी तो चिपक ही जाती है, और नहीं पड़ी तो फिर गोबर क्लाउड है। ओए ओनली शॉटगन। शॉटगन लूटा चूती है बैरलट, इससे कह रहा हूँ।
भाई क्या सर पे पड़ती है इसमें, बेजी हिल जाती। रहता भाई। बिल्कुल ही सिल्वर हुआ। ओए ओए ओए, टीम अटैक भी होता है क्या टीम में? मार दे। घमासान युद्ध चल रहा था तुम्हारा है, तो तू क्या एक बुलेट मार रहा था कि म्यूजिकल उसको भर भर के? ओए एक भी नहीं मार पाया, तू और चला रहा है। ओए ओए भाई नहीं है इसकी क्या नहीं है इसके बस की। बस चलो 90 उसमें भी बस बस इजी। एमसीकल वर्सेस कबूतर भाई, आप सबके एमसीकल। हाँ ठीक है, हेड पे मारते। अरे ऑफ के लिए मत कहने भाई, इसको गेम में ही चलाऊं। अरे मार दो छोड़। ओए भाई क्या पड़ी। मस्त है भाई, इसकी भी स्किन लेनी पड़ेगी लगता है। इतवारे भी भाई, ये कौन से कपड़े पहन रहे तुम? टैग दे टैग, what the fuck टैग। इसके बाद स्काउट ओनली करता हूँ। ओए ओए शॉट मारा भाई, होश पड़ गया। इजी लिख देता हूँ मैं, इजी लिख दूँ। फट गया, खोपड़ा फट गया था। HP होगी मुझे कर। ये सारे बुलेट डाली भाई, मैप ही नहीं आ रहे तो। हाँ कौन आया था, तू था क्या? नहीं है भाई, बीच के तो कुछ होता ही नहीं है। बीच से कुछ नहीं। 3 किल देख रहा तू क्या? इसकी 400 पिंग भी तो और थी। कितना 12 मिनट बचा है, 12 मिनट बचा है। एक डेथ मैच खेले, डेथ मैच खेलते सेम आई स्पॉट में, ये ठीक है। इसमें डेथ मैच वो शॉर्ट मैच था ना क्या? CS सोर्स में
जो स्काउट्स में था, फ्लाइंग स्काउट में वाला। कौन सा वाला? वो क्या नाम है उसका? ऑफ इंडिया? हाँ, जो स्काउट्स ओनली करते थे उसमें। यार नहीं यार, यार नहीं। अभी 10 मिनट ही तो बचे हैं, इसमें अपन एक वो खेल के खत्म करते हैं ना, डेथ मैच। What are the chances of getting gloves in a case? Less than 1%. Less than 1%, bro. Less than. Don't even try. Move it, move it. Get to circle. गायब ही नहीं हो रहा। क्या गायब नहीं हो रहा? Like amount of money I need to put in cases and it's like away give away करो भाई, आज नहीं give away, कल है। फोन मारो, ओए चलो। Don't put any amount, bro. The chances are near to 0. Don't waste your money on the gloves, on the cases, CSGO cases. What the hell? Right in the middle. क्या दिक्कत है? 98 इनपुट। डेथ मैच क्या वो भी है? फाइंड डेथ मैच। इसी के बुक गड़ मारो। बोनस वेपन स्पॉन। तू क्या है? तू क्या किसी कुछ लिखा नहीं। MP डेथ मैच टीम मोड 0 ही तो रखा। टीम मोड क्या करना है तू? अबे एक सेकंड, मैं तेरे को देख पा रहा हूँ क्या? रुक। मैं उसको, कबूतर भाई इधर सामने आना। कौन सा डेथ मैच? अरे कबूतर भाई सामने क्यों नहीं आ रहे? मैं नहीं आ रहा। टीम मोड 0। अरे बोलता है MP DM T डेथ मैच 0 फिर रीस्टार्ट। ये भी दिख रहा है यार। तो भाई उसको कबूतर भाई को मत दो। अरे मत मारो ना, गण मारो। मर नहीं रहा है, पता नहीं भाई। टीम देख
You bought gloves from market or got from case? I bought from market. Today I bought from Buff. Buff is a website. Rather than अब आ रहा है स्काउट से मारो तुम स्काउट निकाल लो भाई स्काउट निकाल एक भी नहीं पड़ रही है कहाँ चुप रहा है इस पे ओए स्काउट ओनली हीटर सारे किसने बोला स्काउट ओनली मैंने बोला ना स्काउट ओनली खेलते ना कहाँ हूँ पीछे तो देखो अरे यार देखा नहीं मैंने क्या भाई बस कहाँ गया मैं कहाँ गया दीवार की मैं अच्छा किधर है अरे यार इतनी सारी मुर्गी क्यों है मुर्गियों से 10-12 पॉइंट बन गए ठीक है साले वाइड निकल के बैठा था मैं तो मुर्गियां मार रहा हूँ भाई बहुत सारे 1-1-1-1 पॉइंट बन गए ये बड़ी टैक्टिक है अरे नाइस बटर अब तूने टैग दे दिया साला मैं भी टैग दे रहा काटता उसको साले मैं मुर्गी की तरफ देख रहा था भाई भाई ये पीछे जाते हैं तो रुक क्यों जाता है यार
ओए साले, ओए यूएसपी नहीं निकाल। भाई 74 नाइस। हाँ 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 छोड़ दे, पकड़ इसको पकड़। मैं करना था ना ये रहे। हंसी बीस्ट ओए क्या होता है? ये भी सही टैक्टिक्स है। What the fuck? ओए यार एक अच्छी भाई 20 तो नूब है भाई, इतना बड़ा नूब तो कोई कैसे हो सकता है? 400 पिंग पे नाइफ हो रहा है भाई। अरे बिल्कुल हो रहा है, देखना होगा ना 400 पिंग पे। 10 सेकंड बाद पता चल रहा है कुछ करा मैंने। 400 पिंग पे 10 सेकंड बाद पता चला। 400 पिंग पे 4 सेकंड बाद पता चलेगा ना सिल्वर। बिल्कुल बचिया भाई, सो अच्छी हो भाई। ये क्या गेम है भाई? 97 in 3 क्या होता है? 400 पिंग। अच्छा पहले 2 हिट यहाँ मारो। पहले 2 हिट मारने बॉडी पे और फिर नीचे देखना। शर्म आ रही आई भाई? इससे लड़ाई चल रही थी। अच्छा हैं क्या हो जाते? मतलब क्या हो जाते हैं? रिलोड पे टापा। अरे यूएसपी तो निकालना बंद कर, ये चोदे। हो गया सारे यूएसपी तो मत निकाल बेशरम। भाई इसको लाइव कर दो। आप एक्सपी कर। अच्छा ओए अरे भाई भाई इजी लिख देते हैं। आ जाओ MI BR वर्सेस MI बिहार।
मैं बिहार तो चली गई इंपेरियल को देखते हैं क्या होता है। कहाँ गया तू कबूतर भाई? कोई और आ रहा है क्या भाई चैट से खेल रहा हूँ जिसको CSGO? T2 खेल लेते ना अपन कैश खेलते कैश खेले गो करते हैं इनका क्या चलता There's a chance Imperial can pick up this map. I think this is why it's just a really exciting matchup coming into it for both sides. The fact that they both have so much to prove for entirely different reasons to make it to the Legend stage. Yeah, I mean, Fallen, the first time he won a major was over 2,000 days ago. And if you look at just who has come and gone since then, there's almost no familiar faces. Even the talent roster for that major, no one that's at this major was working that. The only guy was Maniac and he was coaching Envious. So there's just, whereas everybody else has gone, Fallen is still here. And I think that's what he has to prove, the longevity. Because as a captain in this space, we gave him so much credit when he was winning those majors, 2016, 2017. Even what he did with MIBR after that was pretty impressive at times too. But the fact that he's bringing FNX out of retirement, bringing Fur from pretty much the doldrums of Brazilian CS, and now he's making this roster work and can potentially secure a major spot, that's what gets me excited about this one. I want to give him some credit for his individual level so far this tournament as well. We saw him in Team Liquid, and I guess we all sensed that he was done right. He couldn't really find the individual level. He wasn't good enough to be the difference maker within Team Liquid, especially when they face greater opponents. But in this tournament so far, he's been one of the catalysts behind Imperial in their wins. He's playing solid with the AWP. It's not the old Fallen, the explosive Fallen that is taking over games and dictating the pace of a game, but he's solid enough in order to have an impact on the game, something we didn't see for the vast majority in Liquid. So even Fallen right now is, you know, a guy that I sense is more motivated, right? He's representing his own team, it's his own project, and right now he's playing some damn solid Counter-Strike. Well, I'm very excited to be diving into the final matchup here of the Challenger stage of the PGL Antwerp Major. And to do so, we've got to throw it over to Scrawny and Lucas. क्या चालू है किसके माइक से? अरे आपके माइक से आवाज आ रही है नमस्कार भाई। One final spot, 2 maps away. One of these two teams facing elimination, the other one gets to keep those dreams growing. Fours, they've had 2 shots already, both of them fall flat. Imperial fighting from the bottom side of this bracket, and now one final challenger, and a challenger that is way less experienced, clearly as the desk has touched on. We've got Fallen, who has been here for what seems like forever. Yeah, I think that is the interesting part of the story, because Fours on paper, like the bookmakers say, the favorite in this matchup, and from what we've seen, you know, probably just a really a solid team, solid aim across the board, have proved a lot in the couple of stages that we've watched them in. But Imperial, they have the experience edge. They have so many players who are comfortable in these exact situations. And right now, their hard carry in Bolt, he is actually a really well-seasoned player as well. He's been bouncing around in the Brazilian scene for 6-7 years and having pretty high impact almost all the way through, just never coming into the top 2 teams at any point for a very long time. So I think for that reason, you can't really just look at the odds and say this is a gimme for Fours. Fours are going to be the ones who are more nervous in the situation. Imperial are the ones that people have been doubting more than Fours have. So they've got something to prove, and I think even if they've got the skills, translating them is a whole different game. Most certainly so, man. Holding their nerve while they T2 translate versus those phase skills होना is चाहिए final. another question, right? There's no doubt in my mind that Fours, you're thinking yourself, that grain of doubt has been sowed. And with Bolts finding the frag grenade kill, that's just a bombardment into this B site. Kenzie's gonna be tagged to 12 health, so he finds nothing. Dude, Jesus, what is this? They find nothing. Oh man, that came ऐसे ही खेलना है। frags. It all coalesced within seconds, man. That was perfect read on the setup. Always nice to have a nice demo round to start the game off. That's a hot start in the pistol. Not fun to get called out like that. Nades over the top, perfect. And that's how Kenzie goes down to 12 HP. Vinny comes in quick, couple of headshots with it. There's layers to that too. The fact that they set up those nades, the 2 nades instead of 3, and they had 3 in the pack coming out of short tunnel at the exact same moment. It's got a bit of a message attached to it, dude. Incredibly impressive pace to the pistol, and now we just look to convert it. Yeah, we'll have Imperial doing a lot of searching on the map, and they've been defaulting a ton, which translates well over to Overpass. क्या हो गई? Can feel like quite a vast map.
कबूतर भाई ने एक्सेप्ट नहीं किया कबूतर भाई व्हाट इज दिस बिहेवियर The only idea here for Force is Kenzie doing a lap. Ooh, through the top of bathrooms in Norway. नहीं यार मजाक कर रहा हूँ नहीं Bolts trades back as he falls away. He gets him with the wall bang. Wow, that's enormous. Now there is still Shelfie inside of short water waiting. If they're careful, this shouldn't be a problem, but he does have this deagle up close. He's not going to find anything with it. Fallen and the Mac-10 get the better of him. Jerry's going to try to throw his upgraded pistol to close proximity as well. FNX and Fallen starting to look up top. That's where Kenzie's deagle's looking to be primed. These threats all across the map. And Fallen's going to survive another test here. Bolt's still just lingering down in the water and confirming that there is at least one more CT down here. So yes, everybody else runs at that A site where the scout is in position. Flash and smoke. Force is already back. And with that, he's going to have to concede it. So nice attempt here from Force, serving us up a reminder that, you know, despite preparation and game plan, Force still have incredible individual mechanics and talent and potential. Yeah, it's one of those teams where there's just no real bottom. Imperial जीती तो मेरी 8 में से 9 prediction सही हो जाएगी A lot of the maps that we've watched जॉर्ड बन जाऊंगा So now in this round, I mean, they only have these 2 guns to take to try it again. But Imperial, I mean, they moved at a really good pace. The refrags were good. The default is good so far. I think they'll be quite happy with themselves, and they only lost Vinny at the end of the day. जल्दी मारो यार And I think somebody else who's kind of like, if we sit here and talk about how Bolts was always on the fringe, Vinny on Furia, not a fringe team, but kind of a player on the fringe of that roster. You know, somebody who maybe at times doesn't get all the credit he deserves or was never really set up to be a star outside of Inferno. Vinferno. Everybody knows that's where Vinny owns. So this is the one thing I like about this Imperial team, right? And especially now with MIBR being eliminated, there's only Furia representing Brazil at the major. And Furia are the best of Brazil. Yeah. But if you guys go back and watch that, or read that rather, interview with Fallen, HLTV did an excellent job of kind of extracting his mentality that you play for more than just winning tournaments. They want to lift trophies, that's for certain. They also want to represent Brazil. Representation is important. And Fallen tries to really hammer that home. It'd be awesome to see these guys kind of come out from the shadows and be that second Brazilian roster in the top 16. But for now, it's an empty B bomb site, completely clear for the taking. So an easy third one. Those saved weapons from Force not really able to position themselves for the impact. T-side very passive on the playground push. And for that reason, easy 3-0. Yeah, you know, I had MIBR to win that last map, but that last series. But of course, BNE just showed so much heart, so much strength, and they leave Imperial as the one Brazilian team in the challenger stage to potentially make it through. And yeah, they're trying to carry that mantle for the entire country. Of course, the amount of fans behind this roster is just unparalleled. Especially being able to have FNX back on the server is, I mean, just for me, like, I just loved FNX, watching FNX play so much back in the day. I just had this shower thought where I was just like, man, getting to watch him play on Train one more time would be so sick. Right, that nostalgia hit. That would be a great show match idea actually for the major if they could run it back on Train. I think the thing is too, right? Whether you're a doubter of Imperial, and there are a lot of doubters of this project, because there are certain things that Force has to face as being an unexperienced team, right? There's going to be doubters in that regard. The unknowns, the unproven. But Imperial also face just as much doubt for opposite reasons, other end of the spectrum. These are the has-beens. And when you see them kind of get invested in, it makes you question whether they deserve it or not. Why not invest in the future? Why look back? Well, they are 2 maps away from making a top 16 run at a major. Yeah, it's enormous. Getting to the 2-2, getting to the legend stage, that says it all. It doesn't matter what anybody thinks. So here's Jerry with an off angle inside the bathrooms. He'll catch for off guard. It's a good fight for him, but Vinny finds the trade. Although it costly. Yeah, they win and chill, and they've established here. They're worried, of course, about the stairs presence, and you can see by the conclave of T's, they are aware of stairs, keeping it in mind. Not dealing with it right now, but they made such a good pace already. There's still a full minute left. FNX there, his patience. 2 CTs split up. He gets dinked down to an under 10 HP, just like Vinny. स्पॉट किया था पुश करने का इस चेयर पे खड़े होके पीछे potentially going to have him scale up and maybe hit the B site, but now Zorti is guessing what their next move is going to be. Feels like it's going to have to be Bolts or Fallen to take that next one, try and open up a route somewhere.
It looks like the lurk might get punished. They actually do have time to pull this off. 𝘎𝙆𝙆's walking. Oh no, he'll be the one to find a victim, and that's Vinny down. Fallen here's that retreat as well. Quick sprint from 𝘎𝙆𝙆 all the way to the other end of bathrooms. Fallen's going to clear close corners, 20 seconds. Yeah, suddenly it's becoming a little slow. They've got to actually pick up the pace, and FNX is low. Just get the better of 𝘎𝙆𝙆 though. CT's not yet supporting him, and that nade is huge. All of a sudden, the health advantage doesn't seem to be much of an issue. Okay. Fallen surviving further damage, and Bolt's still on 100 HP. Bomb's gonna be planted on truck, no utility to stop that. 𝘬𝙗 doesn't even have any vision here. He's just gonna try to desperately jump up, and it looks like a save. With that kill, with that frag and that fire on the dice box, we have Imperial push past the fact that FNX is tagged, that Vinny was low, and that Fallen नेड almost मारा died से on वो that हिल भी नहीं entry as well. पाया और फिर 4-0 मॉली से start उसकी for एचपी this कम T होगी side. 10 एचपी हो Every गई single piece और of एक utility फ्लैश came into factor there. Lobby The glitch. smoke and CT. The, ले of course, if Invite 𝘎𝙆𝙆 कर had to be back dice for that Invite play कर to एक work out नई as well लॉबी as it बना के did. नई They लॉबी hit the नई लॉबी perfect flash, and I actually love that they used the HE ये भी नहीं आया first मेरे as पास well. With the amount of time left नई on the लॉबी में clock, 𝘎𝙆𝙆 didn't have a way to move from his position. So the late molly, all that extra pressure, he tried to wait in it, but there really was nothing for him to do when they decided that's where his rotation would be back to. 45 सेकंड बाद रीगो कर देना गाइस स्टार्ट We नहीं almost होगा got into time pressure, but that's because of the late push into bathrooms that एक came नंबर in राउंड the first निकाला place भाई from 𝘎𝙆𝙆. If not, they were actually in a decent spot. And look at the amount of money that Imperial have already stacked up. ओवरपास फेंक पे Bolts and इंपीरियल FNX nearly मिराज 8K और apiece. इन्फर्नो सही है भाई Backbone इंपीरियल ये वाला मैप जीत गई तो निकल जाएगी early and already into the connector boost. Door gets blown off the hinges. Extinguished is the incendiary. Oh, but Do it again. An airstrike destined for 𝘎𝙆𝙆. Oh man, but there was someone propping him up, and 𝘎𝙆𝙆 has also been hit down to just 16 HP. Yo, these calls from Fallen out of the gate are so good. And it's unconfirmed damage, but they know that they wouldn't have hit just one person. So 𝘎𝙆𝙆 would pick one off, and he's inside the stairs. So now they separate his rotation back with that molly. Encouraged to come forward, but is this a trap? Ooh, the flash was there. Vinny almost a victim of it, but he'll find 𝘎𝙆𝙆 as Fur gets hyper aggressive into the A site, opens a huge gap in the defense for that bomb to come over, and so it's an immediate save call from Forest. They know they have to concede this. If Norvi can hang on to the op with this M4, okay, you got something to work with in the next. But Imperial, we see the same nade stack of the pistol. 4 rounds later, Imperial again 5 versus 4 off of that. Yeah. And that was like multiple boosts clearly from Forest. They were trying to stack one up inside of connector. They tried to do it inside of the B site. 4 of the 5 players preoccupied. And Imperial just dodged the threat. Hit him with the bunker busters. They are moving super well right now. And it's so annoying for Forest that they get hit by the double nades because, of course, these are going to be random rounds that Imperial are going to throw them in. Right now, they're just picking all the right spots. That pistol round, that one could have been straight off a demo. Right, This nade one, on just one. thinking Forest, okay, you give them a few rounds, see, maybe they'll try it again, and they hit right. And, you know, part of that is Norway here saving this op on 16 health. Is also a victim of that much damage. Imperial instantly on fire. And they worked hard and slowly for these rounds and actually came back out of a few tricky spots. I mean, they're kind of hitting a bunch of the metrics that are, you know, making you believe that they are just playing the best CS that you could ask at the moment. Tactical pause called. First one मैंने from में भी नहीं Force. होगा भाई Probably feeling red at the moment. एक बंदे ने कितने Seeing red as well. 1000 केस Unable to खोले get थे that 1000 केस में भी उसको नहीं निकला तो क्या बोले CT side yet to get started. 2 nades just नहीं यार लॉबी ग्लिच दूसरे ऐड कर दें दूसरे में रीस्टार्ट कर लो सब रीस्टार्ट गेम Yeah, they're catching all the late pushes. We saw that late push to the back of stairs. FNX was sitting in the corner. Vinny here calls the rotation out. अभी नहीं है शुभम भाई स्पेस लेट हो गया अभी क्या नहीं है इस बाबा बुला लिया हमने तो लॉबी ग्लिच हो रही है केस कोई नहीं चल रहा बोल दिया जिनसे मादर छोड़
बोलो जा बाबा Vinny spotted though. Doesn't want to stick around. Could be pushed. Restart कर लिया हमसे कल Though Fallen is coming with F and X. Restart That कर लिया Molotov game problematic if it weren't for the हैं तो कर क्या ना गांडू जल्दी करके आ जा Barry watching with the MP9. There's two MP9s in this Oh, man. close-up op. No one Then with the headshot. second player, this is going to be the walkout from Imperial. A clean walk into this site, but here comes Sorty with a missed shot, dives down into the water. And Vinny's got to be cautious as he extends into the crosshair, but he will get the kill. The only answer so far from the CT side is ~Kenzie. Yeah. He stops a player that lurk up on Party, a 6th from Imperial. That was Maxing great कर too. लो I mean, all we saw there was a default stairs control, and then as soon as that molly got smoked out, because they could have run for it, they had an idea. Maybe they're too stuck in the stairs, and they used that smoke against them, right? It cuts off their rotation out into short to help B, and they pendulum around through spawn. Vinny takes the lead. Entry's extremely sharp, and another really kind of composed round from Imperial. But they're putting the puzzle pieces together consistently. Calling's looking really smooth, you Yeah. know? And what's really cool about this one is obviously Vinny, he gets jump spotted with the addition of that connector information. He's the person who just slides out through Monster, and Fallen recently giving praise to Vinny and to Bolts for being these kinds of secondary callers within this Imperial system. Says that it allows for Fallen to just kind of focus on the crosshair of the op a little more. So if Vinny's finding these openings, calling them, and everybody follows right suit, I mean, Imperial, that's smooth as can be at the moment. We just kind of sit here waiting for Forrest to get this ball rolling because, of course, this is a team that qualified इसकी माँ को तो through the RMR with a near भाई अब flawless run. डिस्कनेक्ट करना कबूतर भाई 2-0 out of the gate in the first stage. And गो कर एक बार हर बार इनका ही क्या चाह रहा third and final chance, and they're 6 rounds down at the start of the series. Grenades didn't hit their mark this time around. But it's the 45 audio, seconds बाद it's just the Rigo करियो notion that, okay, you keep trying that, we're not actually done. We're going to keep throwing those over and over again. Zordy's going to eat the full brunt of this flash, and I mean, he's really playing by himself here. He can fall back, but there is a timing inside of the bathroom, so it's really unsafe for him. His rotation will get harder. More stairs pressure comes down, and Kenzie wins his duel, blind, but pulls it off. Pretty critical headshot. And just like we saw in the last round, now the rotation up the stairs has been hindered. They're being babysat right now. Yeah, Boltsy smokes off connector door just in case there's any kind of assist. Vinny! Oh, nice shot into Jerry, that answer. Jesus. As he snapped it up, hunting the player down beneath instead, and Fert's the perfect support. Oh, this is an unreal level right now. This is from the 4v5. Well, we're crossing that critical moment, and Shelfie wants to get back to the site. He's too uncomfortable. And Imperial now, they've got the keys. They've just got to turn him. Deep into the monster. Lots of players coming at him, but he does have this little bit of sanctuary here. He's tough. It goes unchecked, but Bolts with the quick trade, fall in the quicker cover. Imperial, 7 terrorist rounds straight, and every issue that Force try to throw at them, it seems like Imperial have this instant response. Yeah, there was a disconnect there with Forest because they actually did have the off out towards A, but it was alone. It was there on long. It was trying to take a fight, and Zorty in his rotation back, they didn't even have anyone inside of bathrooms, no one spotting balloons, no one covering the top of stairs at all, so he couldn't even come to assist anybody rotating out of stairs, and that left 2 players down there in a position where they don't have great fights. The longer that the round goes on, they grow more and more uncomfortable. FNX has set up a tent in the back of the stairs every single round now, so they don't feel good about where they can go. And then what we see, this pressure actually mounts too high. Now, there was a chance for them to trade out at least 1 or 2 players. And I gotta say, it's not just the tactics. They are coming ahead in the kill matrix between all of these different players and basically all the head-to-heads. Imperial are fragging harder than Force right now, which is one of the things that I didn't think was going to be possible. So at the very minimum, Force, they're a team with no bottom fraggers, a roster that has been able to keep up with some of the strongest, highest individual levels in the game. They're going to have to dig deep. Good flash to push Bolts back.
That's going to be him low and disappears through the smoke into the night. All the way back towards T-spawn. Connector this time, zero contest from Fours. Imperial, they're going to grab this one for absolutely free. The A site setup, not even bathrooms, not even long. It is inside that site that everybody's playing here from Fours, and that's a turtled defense. Oh yeah, it's a turtle defense on low grenades. They come onto this on a mix. भाई इस बार आया ना वो कैंसिल करके घर चले गए. Almost out of utility here. A single smoke on 𝘎𝙃𝙆𝙈. Oh, one of two, excuse me. पहले नहीं still चलेंगे has नहीं. his, at the very least. बाद में खेलेंगे. फिर मैं मैच देखूंगा ना मेजर का इतना सेक्सी मैच चल रहा है. स्टेबल नहीं कुछ भी नहीं. मैच चल रहा है ना इतना सेक्सी 7-0 इंपीरियल आ रहा है. 35-second mark. मेरी लास्ट पिक. There's so much pressure on the site hold now. They've given up so much space to Imperial, even though it looks like they haven't done anything just yet. They can go for this full exec on A. The rotations are very slow. As soon as that CT smoke comes in, Bank gets mollied. It just comes down to 𝘎𝑃𝙗 and 𝘎𝑁𝑠y right here, right now. They gotta hit the shots. Closest rotate will be 𝘎𝙃𝙆. That secondary op trying to run, trying to sprint in 15 seconds. They're getting dangerously close to the site, and it's an insta-kill from Fallen. 𝘎𝑁𝑠y in the corner, kills the front runner. 8 seconds left as bomb gets dropped. 𝘎𝑁𝑠y's got the kills and a chance at the ace, but still they fight on with no time. Flanked. If it's not 𝘎𝑁𝑠y, then it's not Fours. Wow. Imperial no longer flawless. Well, at least we get a glimmer of the X factor. Okay, that's a huge play from 𝘎𝑁𝑠y. वैसे मतलब किस टाइम आपका पैसा नोड़ा का पैसा. भाई ये मैच की माफ. भाई बंदी करते हैं. रेवा दे. भाई CSGO नहीं चल रहा. So we have to postpone the stream. कल करते हैं भाई stream. कोई बैठा है चैट में? कोई बैठा है तो भाई गुड नाइट. जब बगैर CSGO में ये चुदवा रहे हैं आज तो केवन चचा को कल मिलते हैं अपन. गुड नाइट. कैसे होती थी बंद करना. वो नहीं मिल रहा मैच भाई. कर गए.